Good evening, dear students. How are you all? I hope you all are doing well and you all are studying also. So today is the third session for chapter number 10. And so far, we have covered various sections and all important ones. Just a minute, let me just have a look as to who all have joined. So we have covered section 139 related to appointment of auditors. Section 140 related, the name of the section is removal, resignation of auditor and giving of special notice. Then we did section 141. In fact, we started our chapter with section 141 dealing with eligibility, qualification and disqualification of auditors. Okay? Today we'll be covering section 142, 143. 142 is with respect to remuneration of auditor, which is a very, very small section. Section 143 is related to powers and duties of auditor and auditing standards. Okay? And we will also be covering section 145, that is auditors to sign audit report, and section 146, which is auditors to attend general meeting. Okay? So I hope, let me just have a look. Satish Thakur, Meghna Menon, Siddharth, Bhardwaj, Siddharth, Gayatri, Sahu, Pooja, Krishnan, Shakti Velan, all have joined. So Hiral, your doubt I will take up at the end of the session if it relates to section 139 subsection 2. Okay? So let us start with today's section. So first of all, I'll be completing section 177 also relating to audit committee. So let us quickly have a look at the module. So 139 we have done, 140 we have done, okay, and that's it. So and 144 also we have done, auditors not to render certain services, okay. Okay. Now let us move on to section 177 relating to audit committee. Okay. So my first question to you for this session and this section, tell me, where have you listened to term audit committee in your earlier chapters? Not here, not in chapter number 10. Apart from this, where have you gone through this term of audit committee? Quickly send in your replies. A lot of important topics. This entire chapter is very, very important. Hana? Send in your replies. We will just remind both of your doubts at the end of the session. I'll definitely take up those doubts. So see, whenever we have discussed earlier regarding management and those charged with governance, so I have always given you example that one of the example of those charged with governance is audit committee. Hana? So who are those charged with governance? Basically those who are responsible for the supervisory functions. Hana? Strategic decision making. Hana? And one of the example is what? Those charged with is what? Audit committee. Now what is audit committee? Who all are required to, which all companies are required to constitute audit committee? What constitutes an audit committee? Hana? What are the important functions? All these things are contained in section 177. Okay? Before moving on to the detailed discussion of section 177, if you remember, when we were doing section 139 and more specifically subsection 11, see, these lines are section 139 subsection 11. Okay? So let us have a look at this again, though we have done it in the earlier session also. So it basically says that wherever a company is required to constitute an audit committee, then all the appointments of the auditor, including that of casual vacancy, will be made after taking into consideration the recommendation of
ऑडिट कमिटी, है ना. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल टेक रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, है ना. एंड व्हेन वी सॉ रूल 3, रूल 6, we saw everywhere that board of directors को audit committee से recommendation लेना है if the company is required to constitute an audit committee. Now, what all companies are required to constitute? So, see students, in the last 2 decades, now there has been a lot of increase in the frauds that are taking place in the companies. So the authorities, the regulators, they have developed an in-house mechanism, in-house checking mechanism within the company itself, है ना, by way of what? Constituting an audit committee. ठीक है. So what all companies are required to constitute audit committee? What are the functions? Let us see. So all public listed companies are required to constitute an audit committee. ठीक है. There is no limit as such with respect to listed companies. So all listed companies, all public listed companies are required to constitute audit committee. ठीक है. Apart from this, the unlisted public company के लिए what is the criteria? If the paid up share capital of the company is more than equal to 10 crores, the company is required to constitute an audit committee. Or if the turnover is more than equal to 100 crores, the company is required to constitute an audit committee. Or if the unlisted public company, देखो public companies is mentioned here, but listed तो cover यहाँ हो गया ना, तो this is talking about this and this is talking about what? Unlisted public company. So if the company is having aggregate of outstanding loans, है ना, borrowings or drawings, debentures or deposits more than 50 crores. See, there is no equal to sign here. It is exceeding 50 crores. This is more than equal to 10 crores and this is more than equal to 100 crores. So if any of these criteria is met, the company is required to constitute an audit committee. So public listed company में there is no criteria. All public listed company are required to constitute an audit committee. देखो listed companies हैं, है ना, पब्लिक का बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है इन कंपनीज में. So that is why they are mandatorily required to have an audit committee who can supervise the functioning, the financial functioning of an organization, कि fraud तो नहीं हो रहा है ना. So public listed company को तो constitute करनी ही करनी है. Unlisted public company के लिए there is a criteria that if paid up share capital is more than equal to 10 crores or turnover is more than equal to 100 crores or aggregate of outstanding loans, borrowings, debentures or deposits is more than 50 crores. ठीक है. और ये कब देखना है? Which is existing as on the last audited financial statement, है ना. लास्ट का ही तो देखते हैं ना in order to decide कि इस year constitute करना है या नहीं audit committee. So we have understood कि what all companies are required to constitute audit committee. Now, what is the constitution of audit committee? So it consists of what? Independent directors, and it consists of directors of the company with minimum 3 directors, and the independent directors will be in majority. अगर 3 directors हैं तो 2 out of them will be what? Independent directors. Who are independent directors? Basically, they are not related to the promoters or any of their related parties, है ना. They are independent. ठीक है. And they are well versed. They have the ability to read the financial statements of the organization. So it consists of directors and minimum 3 directors, out of which majority should be what? Independent directors. ठीक है. It is mentioned here also. Is it clear? So अभी तक what we have seen? We have seen section 177 में provision है, but section 139 subsection 11 पहले ही बोल चुका है क्या? That wherever audit committee is there, board of directors को उसका recommendation देखना है while appointing any kind of like any vacancy, by filling any vacancy of the auditor. ठीक है. Then we saw that all public listed company and 3 criteria has been mentioned for unlisted public company. And then we saw about the constitution of audit committee. Now,
What is the function of an audit committee? So they provide recommendation for appointment of an auditor. They provide recommendation for deciding remuneration of an auditor. They provide recommendation for terms of appointment of auditor. है ना? They review and monitor the auditor's independence. है ना? For all those who are asking me question, मैम कौन देखता है कि auditor independent है या नहीं? तो अब पता चल गया ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस है ना. वैसे तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू सी वेदर इफ ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड है ना. बट स्टिल audit committee has a function to review and monitor auditors independence, to review and monitor the performance and effectiveness of audit process है ना. Further they examine the financial statement and auditor's report, and they help in ensuring better standards of corporate governance. क्या होता है corporate governance? In your finals ना you will be studying about corporate governance in detail in audit. ठीक है, पर अभी के लिए try to understand that the system by which a company is directed or controlled is what corporate governance. So it enhances the standards of corporate governance when there is a committee which is overlooking at the entire functioning of the organization. है ना. So automatically there will be better standards of corporate governance. The way the company is controlled, the way the company is directed will be of better standards. ठीक है. So is it clear? So we have seen who are responsible, which companies are required to have an audit committee. Section 177 deals with it, the constitution and the functions of audit committee. Okay, so let us quickly go through this section from our module. So Pooja, the answer to your query is no. Okay, so applicability of section 177 constitution of audit committee. So section 139 subsection 11 पे अब तो we are clear, we have done it a number of times. So who are required to constitute? It is important to know that in addition to listed public companies, तो listed public companies को तो without any limits करना ही करना है. ठीक है, following classes of company shall constitute an audit committee, करना ही है, shall में नहीं है. ठीक है, all public companies with a paid up share capital of 10 crores or more, so more than equal to 10 crores. All public companies having turnover of more than equal to 100 crores. Or public company having in aggregate outstanding loans, borrowings, debentures, deposit exceeding 50 crores or more. ठीक है, and this is to be seen on the date of last audited financial statement shall be taken into account for the purpose of this rule. ठीक है, so provisions of constitution are applicable only to listed companies and public companies satisfying the above criteria. Now the constitution. The audit committee consists of directors of company. It consists of minimum 3 directors with independent directors forming majority. And what are the functions? So audit committee performs important function like making recommendation for appointment, remuneration, terms of appointment of auditor, reviewing and monitoring auditors' independence, performance and effectiveness of audit process, examination of financial statements and auditor's report thereon. Okay. Besides this, I'm reading from second paragraph here. Audit committee also performs other important functions. That is, it helps ensuring better standards of corporate governance. Corporate governance क्या होता है? It is the system by which a company is directed or controlled. है ना? So this was all about audit committee. Quickly go through this example. Yes, Rahul, you are correct. So quickly send in your reply with respect to this. Required or not, do not look at the answer. है ना? ऐसे ही तो MCQ solve कर पाओगे ना exam में या case scenario. XYZ Limited, a public company having paid up capital of 9 crores. तो paid up capital क्या है? It is less than 10 crores. तो उस वाले criteria में तो नहीं आया है. But having turnover of 150 crores. So that is more than equal to 100 crores. It is more than 100 crores, है ना? And this is what I told you. All these are connected by or. इसमें से कोई भी condition satisfied हो जाती है तो
they are required to constitute an audit committee. It will be required to constitute audit committee because the requirement of constitution arises if the company falls into any of the prescribed categories. Is it clear? Quickly send in your replies. So with this, we have completed section 177 related to constitution of audit committee. Let me just quickly have a look at your queries. Then we will proceed with sealing or number of audits. Quickly tell me the relevant section with respect to sealing or number of audits. Do not look at your modules. So Bindu, you are correct. Gehani, correct. Rahul is correct. Then Menon is correct. Shakti Velan is correct. Aditi is correct. Yes, Pooja, if any of these conditions are satisfied, audit committee करना है, constitute. ठीक है. Now I was asking you sealing or number of audit. So if you remember, when we did section 141, I will quickly complete this section because this is a kind of revision of what we have done in section 141 subsection 3 clause G. Okay, so section 141 subsection 3 clause G. Just a minute. Just a minute. Meanwhile, send in your replies. So you are saying section 141 subsection 3, sealing or number of audit is 20, which is absolutely correct. And what all companies are not included? Send in your replies while calculating the limit of 20 companies. So audit committee we have done now with respect to sealing or number of audit. So students, see, if you remember when we did section 139 subsection 1, if you remember, it was mentioned there that the company is required to take a written consent from the auditor and a certificate to the effect that certain conditions as prescribed in rule 4 of the company's audit and auditor rules have been fulfilled. And one of the conditions is what? That the appointment so made is within the limits prescribed under the authority of the Act, if you remember. While we were doing section 139 subsection 1. So कौन सा limits की बात हो रहा है वहां पे? The limits of the audit that have been prescribed by section 141 subsection 3 clause G. ठीक है? Now this तो we know क्या कहता है 141 subsection 3 clause G, that any person who is in full-time employment elsewhere, he cannot be appointed. He is not eligible to be appointed as the auditor of the company. Or if an individual as an auditor, he is holding appointment in more than 20 companies, except for small company, one-person company, dormant company, or private company having paid up share capital of less than 100 crores, then he is also not eligible to be appointed. Agar more than 20 companies में he's holding office. Okay? So this was about what? Sealing on the number of audit. Now very few concepts and very logical. अब एक बात बताओ, quickly send in your replies. If there are 3 partners in an audit firm, so what is the total number of statutory audits that the audit firm can take, or that the appointment of the firm can be made as the auditor of the companies, except for small companies, dormant companies and all that? If there are 3 partners, do not look at your module, just answer it on your own.
क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज, लॉजिकली सोचो, सब कुछ समझ आएगा. देर इज नो नीड टू क्रैम इट ईच एंड एवरीथिंग, है ना. कुछ लॉजिकल सोचोगे तो आंसर करेक्ट ही आएगा. So Bhardwaj, Menon, everyone is correct. Sudhanshu, so you can also be a lawmaker. Sarthak, Hariram, Siddharth, Shaktivelan, Kaveri, Siddhant. Absolutely correct, है ना. So this limit of statutory audit, the specified number of companies, that is 20, है ना. It is to be considered for every partner. So if there are 3 partners in an audit firm, so the total number of audits, statutory audits, that can be taken by the audit firm in its name as the auditor, then it will be what, 60. Okay. Now our council of ICI, as per the general guidelines of the council, if any of the member in practice is holding at any time appointment of more than the specified audit assignments, then such person, such CA, he shall be deemed guilty of professional misconduct. Clear, simple है, ठीक है. And students, tell me one more thing. एक और question बताओ. Let's say ABC and associates is there. This is what my CA firm. And A is a partner in AYZ and associates also. Now, what is the total number of statutory audits that A as an that can be held in the name of A as an auditor? Per partner होता है ना. तो ABC एंड एसोसिएट्स टोटल कितना ले सकता है, 60. अब ये बताओ यहां पर कितना आएगा. क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज. So can A take 20 audits here and 20 audits here? Yes or no? So the answer is no. In totality, A can take how many audits? 20. है ना? Clear? Is it clear? So it is mentioned here that if a person is a partner in more than one firm, then total 20 maximum. Aggregate should be 20. ठीक है? And the number of partners that is to be seen, that audit firm कितना audit ले सकता है, that is to be seen on the date of acceptance of audit. And a CA in full-time employment elsewhere, he shall not be considered while calculating the total number of audits that can be taken by an audit firm. And obviously the partners or the firm, they are required to maintain a record, है ना. record तो होएगा ना, ऐसे learn थोड़ी ना रहेगा. तो एक record बनाना है कि with respect to what all audit assignments they are holding, right? Further, this limit in case of tax audit under section 44 AB of the Income Tax Act 1961, it will be what, 60. And again, if a person, a chartered accountant, he is holding more than 60 audit assignments at any point of time, he will be held guilty of what? Professional misconduct. Simple है. तो क्या क्या देखा हमने? That rule 4, according to rule 4, certificate में क्या mention करवाना है? That it is within the limits. 141 subsection 3 clause G क्या बोलता है? That a person who is in full-time employment elsewhere or is already holding appointment as auditor in more than 20 companies, he is what? Ineligible to be appointed as the auditor of any company. ठीक है? For every partner देखना है. And council's general guideline के according, if a member in practice is holding at any point of time more than the specified number of audit assignment, he will be deemed guilty of what? Professional misconduct. ठीक है? अगर partner है as a partner in more than 20 companies, तो total in aggregate 20 होगा. ऐसा नहीं कि उस firm में भी 20 ले लिया, इस firm में भी 20 ले लिया, तो फिर तो there is no relevance of this section ना. And number of partners कब देखना? On date of acceptance, a record is to be maintained. Tax audit का क्या limit है? 60. Clear? कोई डाउट है? क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज. कोई डाउट है? Yes, you all are absolutely correct. ठीक है. Though my question was A
कितना इन द नेम ऑफ ए कितना स्टैट्यूटरी ऑडिट्स आ सकता है, ठीक है. सो इज इट क्लियर? क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज. तो वी हैव डन सेक्शन 177 in detail and section 141 subsection 3 clause G in detail. Now another very important section, section 143, and the name is what? Powers and duties of auditor and auditing standards. ठीक है. So send in your replies. Is it clear? अच्छा students, with respect to just a minute, ceiling or number of audits now, there is this case study. Once you go through this topic, है ना, case study से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. तो दिस इज अ होमवर्क, रीड करना, बट बिफोर दैट प्रोविजंस रीड करना. बहुत इजीली, बहुत अच्छे से समझ आएगा सब कुछ, ठीक है. पावर्स एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर, ठीक है. सो नाउ इन योर मॉड्यूल दिस सेक्शन इज डिवाइडेड एज पावर्स एंड राइट्स. तो यहाँ पे पावर्स एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर, and topic number 9 is what? Duties of auditor. So section 143, and here also section 143. कहीं पर subsection 1 होगा, कहीं पे subsection 2 होगा, and we will be doing what? Section 145 also. We'll be covering section 146 also here, ठीक है. So see, powers and rights of an auditor are very, very important while the auditor is conducting the audit of an organization. Let's say one of the right of the auditor is right of access to books. अगर वो है ही नहीं, so how will the auditor conduct the audit? Another right of the auditor is what? To obtain information explanation from officers. अगर ये right ही नहीं होगा तो inquiry वाला कोई concept नहीं होगा ना, है ना. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा. राइट टू रिसीव नोटिसेस एंड टू अटेंड जनरल मीटिंग, है ना. फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कहाँ देंगे इफ ही कैन नॉट अटेंड द जनरल मीटिंग, है ना. राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स. ये जो भी ऑडिट एक्टिविटीज हुई हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स हुए हैं, क्यों हुआ है? बिकॉज ही हैज टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ना, है ना. एंड राइट टू लियन. So right to lien is derived out of general principles of law. As such, there is no section for that. So wherever the relevant sections will come, I will mention them. अभी थोड़ा सा समझ आया? अभी we have not discussed the rights in detail, but I am telling you what is the importance of the right. Right नहीं होगा तो कैसे काम होएगा ना of an auditor while he is conducting the audit of an organization, ठीक है. So let us start discussing the rights one by one, and there are total 15 subsection in section 143. We will be covering all the subsections here, ठीक है, one by one. पर पहले थोड़ा सा कवर करते हैं, then we will go to that summary table. So powers, rights of auditor, and the first one is right of access to books, है ना. बहुत लॉजिकल है, स्टोरी की तरह सुनना, बहुत इजीली लर्न हो जाएगा. समझ आएगा, and I'm sure learn भी हो जाएगा, and you will be able to write in the exams also. Yes, Hiral, you are correct. ठीक है. So right of access to books. Access to books. ठीक है. Now what is included in books, accounts and vouchers? So books, accounts and vouchers. So here books, it includes all books which have any bearing. Bearing is what? Connection. Or are likely to have a bearing on the accounts. Whether these are financial books or statutory or statistical books. Statutory books like cost records. Okay? Or memoranda books, your summaries of, let's say, inventory, costing records. So all these are included in what? Books. What is included in voucher? So it includes all or any correspondence which may in any way serve to vouch, to confirm the accuracy of the accounts, है ना. अगर आपको rent देखना है, whether it is been adequately accounted for in the books of accounts, it is adequately accounted for in the P&L, तो rent से related क्या देख सकते हो? If rent has been paid, तो जो भी rent vouchers हैं, जो भी bank details हैं, whatever is the agreement, so these are what? Anything which
helps to vouch to authenticate the accuracy of the accounts, है ना. So books, accounts and vouchers में क्या आता है ये हमें समझ आ गया. Officer में क्या आता है, we all have done when we did section 141 that section 2 clause 59 of the Companies Act, it defines officer. I'm repeating it here again. It includes any director, manager or key managerial personnel or any person in accordance with whose directions or instructions the board of directors or any one or more is accustomed to act. तो clear है, कोई doubt है? अभी तक हमने क्या पढ़ा है, that books, vouchers and accounts में what all will be included and officer क्या होता है, ठीक है. Now students, you all must have done section 128. Quickly send in your reply. Section 128 of the Companies Act, it is related to what all? Just write few keywords or write the name of the section if you remember. Section 128. Quickly send in your replies. Accustomed is they have a habit. So quickly send in your replies with respect to section 128. So students, section 128 is basically related to maintenance of books of accounts to be kept by the company. Yes, Bhardwaj, you are correct. Bindu, you are correct. Niladri, you are also correct. ठीक है? So, so as per section 128, I will refer to only the relevant text which is relevant here. ठीक है? So every company has to prepare and keep its books of account at the registered office, and it includes what? Books of accounts and other relevant books and papers for financial statements of every financial year. ठीक है? Now, provided that such books of accounts may be kept at any other place if the board of director decides, and the company needs to file with the ROC a notice within a period of 7 days stating the full address where the books of accounts have been kept. What is the form? What is the notice? The form number which is to be filed by the board of by the company within 7 days if the books of accounts are kept at any other place. Anyone who is aware? So it is AOC file, है ना? Further, it also states that if a company is having any branch in or outside India, then in that case, it will be deemed that the company has complied with the provisions contained in subsection 1. What was subsection 1? Whatever I have told you कि registered office पे रखना है या any other place पे है तो board of director को resolve करना है. They will decide, and within 7 days, AOC the form AOC is to be filed with the ROC, है ना? So it will be deemed that the company has complied if proper books of accounts relating to branch are kept at that office, that is branch office, and proper summarized return are sent to the registered office or the head office on a periodic basis. Remember, है ना? इतना understanding clear है? Section 128 क्या बोलता है? Because once you are clear about section 128, so this right of access to books is going to be very much clear to you. Quickly send in your reply. जो भी मैंने बोला with respect to section 128 याद है ना, सबको पता है ना? And Sarthak, you are correct. AOC file. Aditi, yes, you are correct. Maintenance of books of accounts से deal करता है. ठीक है. Sarthak, correct. Aditi, correct. Thakur, Smita, correct. So you are saying, ma'am, we remember all about section 128. फिर ये double entry के बारे में बात करता है, accrual basis के बारे में बात करता है. But I told you that whatever is relevant for this section, this topic, I'll take up only that matter. ठीक है? So now there is a right for the auditor to have access to books of the company, and where is it given? In section 143, subsection 1. So it says that the auditor has a right at all times to books, accounts and vouchers, to books of accounts and vouchers. Now you all know books of accounts में क्या आएगा and vouchers में क्या आएगा.
whether kept at registered office or any other place. अब now section 128 में आता है ना कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी होनी चाहिए, बट एनी अदर प्लेस पे है द डायरेक्टर्स रिजॉल्व, सो विद इन 7 days आपको क्या करना है, नोटिस फाइल करना है कंपनी को. सो दैट इज वाई एनी अदर प्लेस, है ना, बहुत सिंपल होने वाला है अगर सेक्शन 128 आता है. सो एट ऑल द टाइम्स एक्सेस किसको होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स को, क्या सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस पे जो है, नहीं, और एट एनी अदर प्लेस. ठीक है. And the auditor has the right to require from officers. अब officers क्या होते हैं ये भी आपको पता है, section 2 clause 9, to all the information and explanation as they need for the purpose of the audit. ठीक है. Further, the right which we are discussing is not only limited to the records maintained in registered office or head office, it also extends to the branch records. And with respect to the branch records, the right and all the provisions are contained in section 143 subsection 8. And further, in the next session, students will, in the next or next to next session, we'll be covering SS 600, Hana, plus section 143 subsection 8. There I'll be taking up the right of the auditor with respect to what, the branch records. ठीक है. So अभी तक क्या समझ आया हमें, right of access to books. अगर ये right ही नहीं होगा तो audit कैसे होगा, बुक्स तो चाहिए ना, वाउचर्स तो चाहिए ना, है ना. सो एट ऑल टाइम्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स को वेदर kept at registered office or any other place, the auditor may require from officer any information or explanation. And it is not only limited, not limited means this right is not only limited to records maintained at registered office or head office, but also extends to what, branch record, section 143 subsection 8. Now for all those who were asking me in the last sessions that ma'am, how to make summaries, how to learn, so this is the way. If you just look at the module, है ना, so it is given here, तो आप यहाँ पर कहीं पर ये एक छोटा सा समरी बना सकते हो ना, in your own way, in your own language. Just write the keywords here. Learning is going to be very, very easy. And in fact, understanding also. Because यहाँ पर अगर आप summary बनाते हो ना, you are going to get what? A bird's eye view. कि इस पूरे paragraph में क्या लिखा हुआ है. And this is the way where, in which the summary can be made. I hope this is helping you. Tell me, is it clear? Right of access to book. बहुत simple है. देखो, all times पे books of accounts and vouchers पे access है. रजिस्टर्ड ऑफिस हो या एनी अदर प्लेस हो, किसी भी ऑफिसर से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं. एंड जो राइट है सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस वाली बुक्स पर लिमिटेड नहीं है, बट किस पे है, इट आल्सो एक्सटेंड्स टू व्हाट, ब्रांच रिकॉर्ड्स. कहां पे प्रोविजन कंटेन्ड है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 8, जो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. बताओ, इसे समझी बन जाएगी, क्लियर है? और द वे यू लाइक, इफ यू I'm doing like you told you, man. That is good, Hiral. ठीक है, जैसे भी समझ आता है करो, बट करो बस, लर्न करो, अंडरस्टैंड करो, जैसे जिसको समझ आता है. ठीक है. नाउ द सेकंड राइट इज राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स. सो बेसिकली जो हमने यहाँ लिखा था ना, रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिसर्स, नाउ वी आर discussing this in detail. Right to obtain information and explanation from officer. अब officer क्या होता है, section 2 clause 59 you have done twice in fact, है ना. तो अब तो समझ आ गया है. ठीक है. Now बात बताओ, अगर ये right नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने बुक्स में बोला, बुक्स ही नहीं है तो ऑडिट कैसे होएगा. सेम वे, इफ द ऑडिटर इज नॉट हैविंग दिस राइट, इन द एब्सेंस ऑफ दिस राइट, है ना, in the absence of this power, auditor would not be in a position to obtain very crucial information which he may require throughout the audit. It might not be possible for an auditor to know as to what all are the related party transactions by having a look at the financial statements, है ना. So auditor may have to ask, may have to inquire the officers or the directors of the company, है ना. Same way the auditor may have to ask the directors if they have received any benefit, है ना, if they have received any payment from any of the company on any other company on behalf of the company. So there are a number of information which auditor will have to obtain, number of explanations which auditor will have to obtain from the officers. ठीक है. So
कौन सा इन्फॉर्मेशन लेना है, अब अभी से थोड़ी ना बता देंगे ये सब इन्फॉर्मेशन लिखना है, वो तो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है ना. सो दैट इज व्हाई इट इज मेंशन दैट सच इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज ही थिंक्स नेसेसरी. ऑडिटर टू डिसाइड विच इन्फॉर्मेशन, वो तो ऑडिटर विल डिसाइड ना, डिपेंडिंग अपॉन द circumstances of the case, depending upon the client whom he is dealing with. और अगर absence of such power है, auditor would not be able to obtain many information. And tell me, if the auditor is not provided with all the information, auditor officer के पास जाता है, director के पास जाता है, that I am not getting this, I want this information. Director say, I cannot provide you with this information. What is the remedy available to the auditor? I always tell students that the ultimate remedy that is available to the auditor is reporting to the members. Use his audit report. So the only remedy available to the auditor if the information is not provided is the last remedy is what? To report to the members. ठीक है, simple है. Again, these provisions are contained where? In section 143 subsection 1. Let me just take you through the module. है ना? देखो, this right of the auditor to obtain information and explanation as he may think necessary. अब इसे list थोड़ी ना बना सकते हैं कौन कौन सी information लेना है ना? It depends upon auditor's professional judgment. Is wide and important power. In absence of such power, the auditor would not be able to obtain details of amount collected by directors from any other company, firm or person, as well as any benefits of in kind derived by the directors from the company, which may not be known from the examination of the books. कौन सा information लेना है? As required by him. And when the auditor is not provided with the information required by him or is denied access to books, his only remedy would be to report to the members that he could not obtain the information explanation which is necessary for the performance of his duties as auditors. And I have summarized it like this. ठीक है? Simple है ना? क्रैमिंग स्टार्ट कर दोगे तो डिफिकल्ट होएगा, पर लॉजिकली सोचोगे कि कौन सा इंफॉर्मेशन लेना है एज ही कंसीडर्स नेसेसरी. ठीक है. एब्सेंस ऑफ पावर में क्या होगा? ही विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन लाइक कि डायरेक्टर्स ने कोई बेनिफिट इन काइंड तो नहीं लिया है, कोई अदर पेमेंट फ्रॉम कंपनी तो नहीं लिया है. And auditor has to decide if it is not provided, yeah, access of books is not provided, remedy available is to report to members. Clear? So we have covered what? Two rights, both are contained in section 143 subsection 1. Here, ठीक है. Now the third right to receive notices and to attend general meeting. And where is it given? Now it is given in section 146. And in fact, section 146 says that it is the right as well as the duty of the auditor to attend the general meeting. It is the right of the auditor to receive the notices, to be heard at the general meeting and to attend the general meeting. Also, it is the duty of the auditor to attend the general meeting. So now we'll be doing what? Section 146. Before that, quickly send in your replies. ऊपर वाली दो rights A and B, whether these are clear or not. ठीक है? So clear है, मैं बता. ठीक है? So rights to receive notices and to attend general meeting. Now, be with me. Very simple and very interesting. देखो, the auditor is entitled to attend any general meeting. The word any here is very, very important. So this right is not restricted to those at which accounts which have been audited by him are going to be discussed. Hana? But the right extends to any general meeting. The auditor is entitled to receive all the notices and other communications relating to general meeting which the members of the company are entitled to receive. तो जो भी notice, जो भी communication member shareholders के पास जाएगा वो auditor के पास भी जाएगा, है ना? So the auditor is entitled to attend any. So these words, any, all, these are very, very important, है ना? And to be heard at any general meeting in any part of the business of the meeting which concerns them as what? Auditors. ठीक है? So, 10 rights दिखे हमें क्या? Entitled to attend any general meeting.
entitled to receive all the notices and other communication relating to general meeting which the members are entitled to receive, to be heard at any general meeting in any part of the business which concerns him as an auditor. Clear? Further, I told you that this is a right as well as the duty of the auditor to attend the general meeting. And where is it mentioned? Section 146. Okay? So let us just have a look at the name of this section. So what was section 146? Auditors to attend the general meeting. Clear? So it is a right as well as the duty. Just a minute. Okay. So right to receive notices and attend general meetings. So what is mentioned? The auditor of the company are entitled to attend any general meeting, and the right is not restricted to those at which accounts audited by them are to be discussed. Also to receive all notices and other communication relating to general meeting which the members are entitled to receive, and to be heard at any general meeting in any part of the business of the entity which concerns them as an auditor. Section 146 of the Companies Act discusses right as well as duty of the auditor. So section 146 is reproduced here. Thus, this is what section 146 is reproduced. Thus, the right of the auditor to receive, it is the right of the auditor to receive notices and other communications relating to any general meeting and to be heard at such meetings relating to the matter of his concern. However, it is the duty of the auditor to attend the same or through his authorized representative unless otherwise exempted. Okay? So who will be authorized representative? Section 146 में mentioned है that authorized representative who shall be qualified to be an auditor. उसको समझ आना चाहिए ना, मीटिंग में जाके किसी को भी अटेंडेंस थोड़ी ना लगवानी है. He should be in a position to understand the financial statement जो भी डिस्कस होना है. So qualified to be appointed as an auditor का बताना इसका क्या मतलब है? He should be what? सी भारद्वाज, अभी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं. अभी हम इंटरनल ऑडिटर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं. इंटरनल ऑडिटर तो चैप्टर नंबर 4 में हो गया. ठीक है भारद्वाज, इज इट क्लियर? तो बताओ, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. ऐसे किसी को भी थोड़ी ना भेज दोगे. देखो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो दैट पर्सन इज ऑथराइज टू रिप्रेजेंट द ऑडिटर, है ना? करेक्ट, सीए होगा. करेक्ट. ठीक है. सो ही शुड ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है. सो इज इट क्लियर? थ्री राइट्स. फर्स्ट इज व्हाट? राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स. Then is right to obtain information and explanation from officers, and then right to receive notices and to attend general meeting. Now, right to report. अब ये जितना भी आपने अभी तक सेक्शंस पढ़े, अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन ऑडिट असाइनमेंट? The management also, the shareholders also want to have what? An audit report, and the audit and the auditor and his team, the principal auditor and his team are also working. The engagement partner and his team are also working to what? To give the end result, that is to deliver the audit report to the members of the company. Okay? So it becomes one of the right of the auditor, and we will see when we will do the duties of the auditor that this is one of the duties also. So why it is not discussed here? Because duties mein na, there is a list of the duties of the auditor, that what all he is required to state. So it is in detail, so that is why separately it is given. ठीक है? So right to report to the members of the company on the accounts examined by him. ठीक है? बहुत सिंपल है, लॉजिकली समझना. आपको ये समझ आएगा कि इसमें लिखना क्या है. ठीक है? What is the explanation that is given in the Companies Act? So where is this right contained in Companies Act? It is contained in section 143 subsection 2. फर्स्ट किस में था? सेक्शन 143 सबसेक्शन 1. सेकंड भी किस में था? सेक्शन 143 सबसेक्शन 1. थर्ड जो मीटिंग से रिलेटेड है, दैट इज सेक्शन 146, एंड दिस इज व्हाट? सेक्शन 143 सबसेक्शन 2.
So right to report to the members. When you will be doing chapter number 11, there you will see the format of the audit report, and you will see that members in case of a company are the addressee to whom their report is addressed. Okay? On accounts examined by him. So the auditor is required to report to the members on the accounts examined and the related financial statements. And when the auditor is giving the report, such report shall take into account what all things? The provision of the Companies Act, the accounting standards, and report जब form कर रहे हैं तो standards on auditing भी तो देखोगे ना कि essays की क्या requirement है, various matters as provided in the various provisions, various rules and order. Order का example क्या है? CARO 2020, which we will be doing in detail in the next session. ठीक है? And how the auditor is going to report. So this is practically used, this language, that to the best of the information and knowledge, the financial statement give a true and fair view of the state of company affairs. State of company affairs matlab as at the end of the financial year, matlab we are talking about what? Balance sheet and P&L and cash flow for the year. So simple है, इसमें क्या बताया गया है कि रिपोर्ट करना है किसको? मेंबर्स को. किस चीज पे? ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड एंड द रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. एंड व्हाइल रिपोर्टिंग, what all shall be taken into account? What are the provisions of the Companies Act? What are the requirements of accounting standards? What are the requirements of standards on auditing? Various matters that are required to be complied with as per the various provisions, the rules, the order under the Companies Act, and what is the language the auditor is going to use, that to the best of the information and my knowledge, the financial statement reflected true and fair view. Okay? Let us quickly have a look. See, the auditor shall make a report to the members on the accounts examined by him and on every financial statement which are required by or under this act to be laid before the company in the general meeting. And the report shall, after taking into account the provisions of this act, accounting and auditing standards, matters which are required to be included under the provisions of this act, any rules or under any order. Order ka I gave example of what? CARO 2020. ठीक है. And what language the auditor is going to use, that to the best of his information and knowledge, the said accounts, the financial statements give a true and fair view of the state of company's affair as at the end of the financial year. That is talking about what? Balance sheet and profit and loss and cash flow for the year and such other matters as may be prescribed. ठीक है. And the language that the auditor uses when he is giving a report, that we will have a look when we will do chapter number 11. Okay? So Hiral, you are correct, but I'll show you a practical audit report and you will be happy to see that this is the exact language that is used in the audit report. Okay? Is it clear? So Rahul, your query is not clear to me. Please resend it. Okay? So 4 rights. First is what? Right of access to books. Second is what? Right to obtain information and explanation from the officers. Third is what? Right to attend the general meeting to receive notices. Fourth is what? Right to report to the members on accounts examined by him. Hana? And last is what? Right to lien. Quickly send in your replies as to what do you understand by the term lien. Lien क्या होता है? Right to lien. I'm waiting for your replies. I'm waiting for it. ठीक है? So it basically means lien का क्या मतलब होता है? To keep possession. ठीक है? This is also very interesting. So I was mentioning purvadhikar. So Hitesh is saying right to keep possession of something. Charu is saying possession.
Sarthak is saying right to keep possession or custody. Smitha, Bindu have written possession. Correct. Okay. Now this is right to lien. Students, it is a general principle of law. Okay. It is what? It is a general principle of law. It is derived from a general principle of law. So general principle क्या होता है? पहले we will understand that. Then how it applies in respect of auditor, we will understand that. Okay. So, and thirdly, we will understand that Institute of Chartered Accountant in England and Wales का क्या understanding है. And fourthly, we will see SC 230 and Standard or Quality Control 1 क्या कहता है. तो बेसिकली ट्राई टू डिवाइड दिस राइट टू लियन इन 4 पार्ट्स. तो पहले समझते हैं कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या कहता है. सो देयर इज नो सेक्शन एज सच, बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ. एंड व्हाट इज दैट जनरल प्रिंसिपल? तो इट सेज दैट एनी पर्सन हैविंग लॉफुल पोजेशन, लॉफुल ऐसे चुराया नहीं होना चाहिए, लॉफुल पोजेशन होना चाहिए. ठीक है, बिना बताए नहीं लेना है कोई भी प्रॉपर्टी को. ऑफ समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी on which he is what any person has worked may retain the property for non-payment of his dues. His मतलब वही any person की बात हो रही है. On account of work done on the property. So what is the general principle of law? If it says that if any person is in lawful possession is legally, lawfully उसने possess किया है of somebody else's property, किसी और की property है. But what is the condition? On that property, that person should have worked. And with respect to that work, the payment should not have been made. Then that person can retain the property, can possess, can exercise the right to lien on that property. तो लॉफुल पोजेशन होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए, पेमेंट नहीं मिली होनी चाहिए, तो लॉफुल पोजेशन हो सकता है. नाउ लेट अस रीड इट अगेन. एनी पर्सन, आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर. सो दिस इज व्हाट जनरल प्रिंसिपल. एनी पर्सन हैविंग लॉफुल पोजेशन of somebody's else's property on which that person he has worked may retain that property for non-payment of his dues on account of work done on the property. ठीक है. Now how it applies for an auditor? It says, अब देखो auditor किसके ऊपर काम करता है? Books and documents of the company ना, है ना? Books and documents of the company. So any person में कौन है? Auditor. So may retain that property मतलब he may exercise lien on the books and documents of the company. ठीक है. Placed at his possession by client मतलब lawful possession है ना, legally लिया हुआ है ना. For non-payment of fees for work done on books and documents. Non-payment of fees है for the work done on books and documents. Clear? Is it clear? So abhi tak we have understood what is the general principle of law. Then we saw how it is applicable with respect to an auditor. तो any person की जगह क्या है? Auditor. Having lawful possession को कैसे लिखा हुआ है? Placed at his possession by the client. On somebody else's property को क्या लिखा हुआ है? Books and documents. May retain or may exercise the right of lien on books and documents for non-payment of fees for work done on books and documents. ठीक है. So a similar view has been given by Institute of Chartered Accountant in England and Wales. And what is it? Same है, but step by step देखो. So the Institute of Chartered Accountants in England and Wales has expressed a similar view. तो क्या view है? Documents retained must belong to the client who owes the money. A client A limited के documents पे work किया है, वहां से fees pending है. By this A के पास B limited का कोई document है, वो थोड़ी ना उठा लोगे. A limited से ही आपने work किया है ना, तो A limited के documents लो.
ठीक है. So documents retained must belong to the client who owes the money. Documents must have come into possession of the auditor on authority of the client. They must not have been received through irregular or illegal means. In case of the company, client, they must have received with the authority of board of directors. ठीक है. The auditor can retain the documents only if he has done work on the documents assigned to him, and such documents can be retained which are connected with the work on which fees has not been paid. तो particular set of documents है जिस पे work किया है, and with respect to that you have not received the fees. Clear? Is it clear? ठीक है. Is it clear? Now I told you that there is one more point relating to what SC 230 and SQC 1. ठीक है. So SC 230 and SQC 1 says that audit documentation. Now we are not talking about books of accounts and documents of the company. We are talking about audit documentation. Quickly send in your replies. Whose property is the audit documentation? Is it the company or the auditor? Pooja, I will answer to your query. Wait, this right is not yet complete. So, whose property is audit documentation? अब हम audit documentation की बात कर रहे हैं, तो all of you have no, one wrong answer is there. So it is whose property? Auditors. Auditor ने audit documentation बनाया ना, है ना. तो क्या right of lien की बात यहाँ पर आएगी? नहीं. Why? Because audit documentation are the property of what? The auditor himself. The auditor may at his own discretion make portions or extracts from audit documentation available to the client, है ना. वो ऑडिटर की मर्जी है, बट राइट ऑफ लियन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के केस में तो राइज नहीं होएगा ना, बिकॉज वो तो ऑडिटर की. देखो ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समवन एल्सेस प्रॉपर्टी, somebody else's property. तो लेकिन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर की, है ना. सो SC 230 and SQC 1 has been referred here, which says that unless otherwise specified by law, audit documentation is the property of the auditor. He may at his discretion make portions or extracts available from audit documentation to the clients. You all have done this in detail in chapter number 3, so I am not taking this paragraph in detail now. ठीक है. Now students, if you remember section 128 जो अभी हमने डिस्कस किया था, हमने क्या पढ़ा था वहां, that the books of accounts and vouchers are kept at where? At the registered office, है ना. And such other place जो भी बोर्ड डिसाइड करता है, provided ROC के साथ within 7 days AOC फाइल हुआ है. ठीक है. Now tell me, is it practically possible that auditor is exercising lien की auditor के ऑफिस में इसके क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं? प्रैक्टिकली हाउ द ऑडिट हैपेंस, ऑडिटर गोज टू द ऑडिटर्स टू द क्लाइंट्स प्लेस, वहां जाके ऑडिट करते हैं ना, है ना. सो दैट इज व्हाई इट सेज दैट लीगली, दो लीगली ऑडिटर में एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन इन केस ऑफ कंपनीज, इट इज मोस्टली impracticable for legal and practical constraints. His working papers, the audit documentation being the auditor's property, the question of lien on them does not arise. Clear? So whose query was it? नीलाब्जो, चैप्टर नंबर 3 का डाउट नहीं आएगा यहाँ पे, अब टाइम नहीं है. इफ टाइम परमिट्स इन द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, देन आई विल टेक अप दिस डाउट, बट अभी नहीं, है ना. सो पूजा, इज योर डाउट क्लियर? सो इम्प्रैक्टिकल है ना, ये इम्प्रैक्टिकेबल है फॉर लीगल एंड प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट, बिकॉज सेक्शन 128 क्या कहता है कि इनको रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है ना. एंड द कंपनी प्रोवाइड्स व्हाट? रीजनेबल इन facility to auditor for inspection of books of accounts by directors and other authorized. Taking an overall view of the matter, it seems that though legally auditor may authorize, so where am I reading? I'll just highlight it. Interesting है, देखो, है ना. The auditor may exercise right of lien in case of companies. It is mostly impracticable for
लीगल एंड प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज वो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही तो रखनी होती है, एंड हिज वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, तो वहां पे तो क्वेश्चन ऑफ लियन डज नॉट अराइज. ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है. सो विद दिस वी हैव कवर्ड 5 राइट्स. What are those? Quickly, a recap. Right of access to books. Then we did right to information and explanation from officers. Right to receive notices and to attend general meeting. Right to report to the members of the company on accounts examined by him. And last but not the least, right to lien, which is a general principle of law. Okay. So quickly send in your replies ki all these 5, whether these 5 rights are clear. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. चैप्टर नंबर 3 का डाउट कैसे क्लियर होएगा ना अभी. हाँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में आई कैन टेक इट अप. सो नीलाभ जो नेक्स्ट सेशन में बताना है ना. ठीक है. एंड हीरल यू ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन ओनली सेंड मी योर 2 डाउट्स अगेन. ठीक है. So quickly send in your reply. Is it clear? Should we proceed further with duties of auditors? So Hitesh is saying, ma'am, crystal clear. Bhardwaj is also saying, ma'am, crystal clear. See, Sonika is saying, ma'am, can you please upload these notes? See, students, I use a lot of short forms when I'm writing here. है ना. I use, in fact, many times I leave the sentence incomplete when I'm explaining you. जितना चाहिए उतना लिख दिया, बाकी छोड़ दिया, है ना. So if I upload these notes ना, it may create confusions. शॉर्ट फॉर्म है, आपको शायद समझ ही ना आए कि मैं क्या लिख रही हूँ. अभी तो आई एम एक्सप्लेनिंग ना, तो इसलिए समझ आ रहा है. सो दैट इज द रीजन आई कैन नॉट अपलोड दिस नोट्स. बट सी, ट्राई टू मेक इट अ हैबिट दैट आफ्टर द सेशन, है ना, go through the module and side by side अपने notes अपनी language में बनाओ. And if you want any help, then this video is always available to you. You can just take screenshots या pause करके आप देख सकते हो, है ना. हाँ, what I can do is, जैसे अभी इसको थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को I can put it here कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, या later on you may stop the video and look at the entire explanation. जैसे right to obtain information explanation है. ठीक है. This is the third right. Then the fourth right. Let me just. ठीक है. I hope it is coming on one sheet now. ठीक है ना. Wait. ठीक है ना, अब आ रहा है ना. ठीक है. And this is the fifth one. This one. ठीक है. Is it clear? सिद्धार्थ, अब ऑडिट रिपोर्ट पे राइट ऑफ लियन क्यों होगा? आप ये बता. देखो, somebody else's प्रॉपर्टी. अब ये जो भी हमने काम किया है वो ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए किया है ना. एंड ऑडिटर इज सेइंग मैं ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ. ठीक है. सो ऑडिटर में give different types of reports. That will be doing in chapter number 11. Qualified है, adverse है, disclaimer है. हाँ, that can be given. ठीक है. But right of lien, try to understand the basic कॉन्सेप्ट ना, कि somebody else's प्रॉपर्टी को आप रिटेन कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर काम किया है एंड यू आर नॉट गेटिंग योर फीस फॉर दैट. somebody's else's प्रॉपर्टी. क्लियर कार्तिक? Yes, Pothina Bindu, it is the duty of the auditor to attend the general meetings.
When ready, your queries are not reaching me, so you can send those again. ये वाला तो आ गया that ma'am whether my queries are reaching you or not. तो अभी तक कोई नहीं आया आपका answers reaching or not. So send those again, whatever answers or queries you have forwarded me earlier. ठीक है? So now we'll be starting with what duties of auditor. ठीक है? So rights and duties go hand in hand ना. Duty होगी ना ऑडिटर के ऊपर. And students, the duties of the auditors, the scope of duties of auditors are generally being extending over all the years, है ना? Every year, or you can say over years, there is an addition that auditor shall state in his report regarding this. Then you may find that later on something else is also added. Hana? So whatever we will be studying today with respect to duties of auditor, the language that we'll be studying that auditor needs to state in his report regarding various points, you will see that exactly the same language is being used in the practical audit report. In fact, I'll do one thing, if time will permit, I'll show you a practical audit report of a company. Then you will be able to see कि same language आता है ना? ड्यूटी क्या है? जैसे वन ऑफ द ड्यूटीज टू रिपोर्ट, अब उसमें एक्सटेंड होता जा रहा है कि अब ये भी रिपोर्ट करना है, ये भी रिपोर्ट करना है. यू ऑल हैव डन चैप्टर नंबर 9 now. And if you remember, there are various disclosure requirements. Schedule 3 के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा disclosure requirements add हो गए हैं ना. So वहां पर तो there is a responsibility on the company that they need to disclose in the notes to accounts, or they need to make disclosures with respect to various things. Here you will see that there is a responsibility, there is a duty on the auditor to report on such disclosures. ठीक है? और ड्यूटी क्या होगी? क्या अनसाइंड रिपोर्ट दे दे? नहीं ना, साइन तो करना पड़ेगा ना. So this is also one of the duty of the auditor to sign the report. And where is it contained? Section 145. है ना? बहुत लॉजिकल है. ठीक है, लॉजिकल है. तो जैसे राइट ऑफ ऑडिटर को हमने पहले बहुत वेग सा अंडरस्टैंडिंग दिया था. लेट अस जस्ट लुक एट ऑल द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स, देन वी विल अंडरस्टैंड ऑल द ड्यूटीज वन बाय वन. देखो, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स. सो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1. If you remember, I told you that section 143 subsection 1 में rights भी हैं, duties भी हैं. तो 143 subsection 1 क्या बोलता है? इन मैटर्स पे ऑडिटर को इंक्वायर करना है. इट इज अ ड्यूटी, है ना? ड्यूटी है ये ऑडिटर की. ठीक है. देन ड्यूटी टू रिपोर्ट, रिपोर्टिंग भी करनी है. दिस इज अ ड्यूटी एज वेल एज व्हाट, राइट में भी हमने पढ़ा था. ठीक है. देन आई टोल्ड यू ना कि एडिशन होता रहता है. सो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में देर आर वेरियस मैटर्स. इनफैक्ट देर आर 10 पॉइंट्स जहां ऑडिटर इज रिक्वायर्ड. देखो क्या लिखा है? ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो स्टेट, करना ही करना है स्टेट. ठीक है. देन अनसाइंड ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं देनी ना. सो व्हाट इज द नेक्स्ट ड्यूटी? टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट. एंड वेयर इज इट कंटेन? सेक्शन 145 में. ठीक है. देन ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. सो हम तब से पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. तो कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 में लिखा गया है कि द ऑडिटर नीड्स टू कंप्लाई. ठीक है. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन सेक्शन 143 सबसेक्शन 10 ऑल्सो. ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में पढ़ा है ना ये आपने. ठीक है. देन देयर इज अ पॉइंट, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय सीजी. दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कैरो 2020. तो ये ऑप्शनल थोड़ी ना होता है. दिस इज अ ड्यूटी, ऑडिटर को करना ही करना है रिपोर्ट. ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच ऑडिट, है ना? ऐसे 600 जब करेंगे तब देखेंगे डिटेल में. ठीक है. So this was all about what? Duties. ठीक है. Now let us quickly have a look at the name of section 143. रुको. ठीक है. So what is the section? Powers, duties of auditors and auditing standards. तो अभी देखा ना, 143 subsection 9 and 10 auditing standards की बात करता है. And पावर्स एंड ड्यूटीज कहाँ कंटेन्ड है? 143 सबसेक्शन 1 में भी है, सबसेक्शन 2 में भी है. ठीक है. एंड विल बी कवरिंग व्हाट? ऑडिटर्स टू साइन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. ठीक है. क्लियर आ रहा है? जस्ट अ वेरी वेग आइडिया एज टू व्हाट ऑल वी विल बी डिस्कसिंग. एंड स्टूडेंट्स, बिलीव मी, इंपॉर्टेंट है, एंड इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंटरेस्टिंग है.
कुछ भी इसमें लॉ तो है ये, बट कुछ भी इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी है एंड बहुत लॉजिकल है। स्टोरीज की तरह समझोगे ना, दैट आई एम एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इमेजिन योर सेल्फ एज एन ऑडिटर। तो अब मैं जा रहा हूँ ऑडिट पे, या इफ आई एम गोइंग फॉर एन ऑडिट, तो मेरे क्या राइट्स होंगे या मेरी क्या ड्यूटीज होंगी, अगर वो समझ लोगे ना एज अ स्टोरी, एज अ लॉजिकल स्टोरी, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, सो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में हमें ड्यूटीज पढ़नी है, बट वी विल डू वन थिंग, we will take a break of 10 minutes here. After the break, we will be covering duties of auditors. And students, I'm telling you, in the next session I'll be taking up Caro 2020. Very, very important. In fact, this entire chapter is very important. ठीक है, so ये सब पढ़ के आना, जो हमारा 3 sessions में complete हो गया ना, go through them. ठीक है, ठीक है, is it clear? So we will take a quick break of 10 minutes. Before going for the break, quickly send in your replies. समझ आ गया है? कोई डाउट है तो do send them. ठीक है? So a break of 10 minutes here.
So students, I hope you all are back after the break. And I can see a query. Hiral is saying, ma'am, if we do not write subsection C, students have given you a sequence of subsections for your better understanding. नहीं learn होता है तो it is always better not to write the subsections. If you are writing wrong subsections, तो better क्या है कि you do not write them. ठीक है? But yes, sections can be learned. The name of the sections, like let me just share the screen. है ना? ये तो आपको so and section number and section name, अगर ये भी नहीं like you are confused when you are writing your exam, तो obviously do not write these sections. So you can always write as per the relevant section, relevant subsection of the relevant section of Companies Act, है ना? Instead of writing the wrong subsection or wrong section, it is always better to avoid writing the section. So you can write relevant section of Companies Act. But yes, obviously, if you write the section numbers correctly, it is a positive point only. ठीक है हिरन? Only section numbers are okay. ठीक है? See, Karthik, whatever you are saying with respect to audit report, now this we will be discussing in chapter number 11, and the case that you have made, now it will happen in rarest of circumstances, है ना? So, but still we will discuss this in chapter number 11. Okay. Now let us start duties of auditor. Okay. So first duty is duty of auditor to inquire on certain matters. Okay. So where is this duty given? It is given in section 143 subsection 1. Okay. So there are 6 matters on which the auditor has to inquire. Okay. On which the auditor has to make an inquiry. Okay. What are these 6 matters? Matters are A to F. So first is whether the loans and advances that have been made by the company on the basis of a security, whether these loans and advances are properly secured, and whatever are the terms on which these loans and advances are given, whether these are prejudicial. Prejudicial is what? Harmful to the interest of the company or the members. Okay? So it is the duty which has been cast on the auditor by section 143 subsection 1, which says that auditor, it is a duty of the auditor to inquire on certain matter. And the first matter is that whether if the company has made any loan and advance and it is secured, then whether it is properly secured, and the terms, for example, the repayment schedule or the interest rate, and the terms on which they have been made, whether these are what? Harmful to the interest of the company or its members. Prejudicial, that is harmful. So auditor को ये inquire करना है. ठीक है? Second, whether transactions of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company. ऐसा तो नहीं है that various adjustment entries have been made where there is no flow of money, है ना? फिक्टिशियस एंट्रीज तो नहीं किया है कि डेटर को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, एनी ऑफ सच एडजस्टमेंट एंट्रीज, ऐसा तो नहीं है. सो लेट अस रीड इट अगेन. Whether transactions of the company which are represented merely by book entries, है ना, are prejudicial to the interest of the company. I gave example of what? जहां कोई flow of money नहीं है, बस एक पार्टी को डेटर दिखाया हुआ है, उसको क्रेडिटर भी दिखाया हुआ है, उसी को आप डेबिट क्रेडिट करे जा रहे हो. ठीक है. थर्ड,
where a company not being investment or banking company, तो अभी हम investment या banking company की बात नहीं कर रहे हैं. Apart from investment and banking company, there is a duty on the auditor to inquire whether so much of the assets of the company as consist of shares, debentures or other securities have been sold at a price less than at which they were purchased. मतलब, let me just give you an example. X Limited है आपका client. एक्स लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट्स में, एंड इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग कंपनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में तो सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे ही ना. सो इसके एसेट साइड पे ए लिमिटेड के शेयर्स आ रहे हैं. दीज वर परचेज फॉर लेट्स से 2 lakhs and now these have been sold at 1.5 lakhs. So whether a company, now read this, not being investment or banking company, whether so much of the assets, investment asset side pe aayega na, as consist of shares, debentures or other securities, that is shares of what? A Limited, have been sold at a price less than, that is 1.5 lakh, which is less than the price at which they were purchased by the company, 2 lakhs. Because this is something fishy na, aisa kyun kiya hai कि शेयर्स पहले 2 lakhs पे खरीद लिया, 1.5 lakhs पे सेल कर दी. ये तो बिजनेस भी नहीं है ना कंपनी का, बिकॉज इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी. सो देयर इज अ ड्यूटी ऑन द ऑडिटर टू इंक्वायर. ठीक है. फोर्थ, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैज बीन शोन एंड डिपॉजिट. ऐसा तो नहीं है कि कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिया था उसको एज ए डिपॉजिट दिखाया हुआ है. ठीक है. ई, whether personal expenses have been charged to revenue, P&L में कोई पर्सनल एक्सपेंसेस में भी डायरेक्टर्स के या किसी के भी कोई पर्सनल एक्सपेंसेस तो चार्ज नहीं किए गए हैं. एंड लास्ट, it says that if shares have been allotted for cash, whether cash has been actually received in respect of such allotment, and if not, cash nahi mila hai, if no cash has actually been received, whether the position as stated in accounts of books and balance sheet is correct, regular and not misleading. ठीक है. If shares have been allotted for cash, ठीक है, so whether cash has actually been received, and if it has not been received, then whatever is the position which is shown in the balance sheet, in the accounts, whether that is correct, regular and not misleading. ठीक है. Now students, the section says that auditor has to inquire on certain matters, है ना. यहां पर अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ऑडिटर शैल स्टेट. अभी क्या लिखा है? ऑडिटर शैल इंक्वायर. अब इंक्वायर करके क्या करना है? अपने पास रख लेना है? नहीं. क्या करना है? देखो, as per one of the pronouncements, as per one of the authoritative announcements of research committee of ICAI, it says that ये जो ऊपर वाले 6 points है ना, इस पर ऑडिटर will inquire, and the auditor is not required to report on these 6 points if he do not have any special comments, he does not have any special comments to make on any of such items. अगर ऑडिटर को लगता है कि ये कुछ इसके ऊपर कमेंट करना है कि पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू हुआ है, तो ऑडिटर को मेंशन करना है. इफ ऑडिटर फील्स कि ऐसा नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू नहीं है, तो ऑडिटर नीड नॉट रिपोर्ट, है ना. तभी तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स. अभी स्टेट करना है नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है. देखो, आई टेल यू वन मोर थिंग. अभी वी विल बी डूइंग सेकंड पॉइंट, जहां पर है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3. इट स्टेट्स दैट द ऑडिटर शैल आल्सो स्टेट. तो यहाँ पर तो कंपल्सरीली, मैंडेटरीली ऑडिटर को लिखना ही लिखना है. इन 10 पॉइंट्स पे तो ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी ही करनी है, वेदर एडवर्स है, वेदर पॉजिटिव है. ठीक है. लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दीज 6 पॉइंट्स ऑडिटर को पहले तो इंक्वायर करना है. अब इंक्वायर करके ये थोड़ी ना कि उसको यूज नहीं करना है, उसको यूज करना है. और ये कहाँ लिखा हुआ है? द ओपिनियन ऑफ रिसर्च कमिटी ऑफ ICAI इज रिप्रोड्यूस बिलो. देखो क्या लिखा है. द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द मैटर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, जो ऊपर 6 पॉइंट्स थे, unless he has any special comments to make on the items referred to therein. If he is satisfied as a result of the inquiries that he has no further duty to report, that he is so satisfied. In such a case, the content of the auditor's report will remain exactly the same as the auditor has to inquire and apply his mind to the information elicited by the inquiry in deciding whether or not any reference is to be made. ठीक है. So देखो,
try to understand one more point here. The auditor is required to inquire. The auditor shall inquire. Inquire तो करना ही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेशल कमेंट नहीं है तो रिपोर्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. But this fact, this opinion of research committee, it will not relieve the auditor from his duty to inquire. Inquire तो करना ही करना है. ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडिटर विल से कि ठीक है अगर कोई स्पेशल कमेंट्स नहीं है तो आई विल नॉट इंक्वायर. नो, द ऑडिटर हैज टू इंक्वायर. The auditor will definitely inquire with respect to these 6 points. लेकिन research committee के announcements के according to the authoritative announcements of the research committee of ICAI, it says that अगर कोई special comments नहीं है तो auditor need not report, है ना. But try to understand कि it will not relieve the auditor of his duty to inquire. Clear? Now let us have a look at this point again. Duty to of auditor to inquire on certain matters. देखो यहाँ पे नहीं है auditor shall state, है ना. वो कहाँ आएगा? सेक्शन 143 सबसेक्शन 3. तो वहां तो 10 पॉइंट्स पे स्टेट करना ही करना है, ठीक है. और यहाँ पर क्या है? ड्यूटी टू इंक्वायर. तो क्या क्या इंक्वायर करना है? दैट वेदर लोन्स एंड एडवांसेस जो गिवन बाय कंपनी है, वेदर दीज आर based on security, whether these are properly secured. ऐसा तो नहीं है that terms are prejudicial to the interest of the company or the members, whether any transaction are represented merely by book entries, or whether these are prejudicial to the interest of the company, whether the company which is not an investment or banking company, whether so much of the assets are as consist of shares, debentures or other securities, whether these have been sold at a price less than the price at which they were purchased, है ना. Whether loans and advances of the company made by the company have been shown as deposits, whether personal loans have been charged to revenue. अगर किया है तो मेंशन करना है. सेम वे अगर कोई बुक एंट्रीज शो की हैं विच आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो मेंशन करना है. अगर नहीं है, कोई स्पेशल कमेंट्स नहीं है, द ऑडिटर नीड नॉट मेंशन. Further, last, that if any of the shares have been allotted for cash, whether the cash has already been received, and if not actually been received, and if not, then auditor needs to see whether the correct picture has been shown in the books of accounts and the balance sheet. That is, the position shown is what? Correct, regular and not misleading. Clear? Hana? So you may get a true false that with respect to the duty to inquire on certain matters mentioned in section 143 subsection 1, the auditor shall state irrespective of whether he has a positive or a negative or an adverse comment. So the answer will be what? False. Because only if he has any special comment to make with respect to these points, then only he will report in his audit report. Otherwise, he will not mention. Send in your reply. Is it clear? Yes, students. Yes, Pooja, you can mention the section number only. ठीक है? I told you that from the very beginning of this session, I am telling you that this section consists of इतना subsections. ठीक है? तो that is for your better understandings की linkage आ जाए, है ना? So whatever is given in your module, आपको वो करना है. And if subsections you are not able to learn, then obviously the sections can be written. Is it clear? ठीक है, ठीक है. Now duty to report, है ना. So duty to report, I told you कि इसको वहां पर क्यों नहीं एक्सप्लेन किया जहां पर right to report था, है ना. If you remember, तो I told you that यहाँ पर क्यों नहीं किया, because duty में ना there are a number of points कि ऑडिटर को ये भी रिपोर्ट करना है, ये भी रिपोर्ट करना है. So basically the right to, the duty to report, just okay, so duty to report. So it says that under provisions of section 143 subsection 2, the auditor has to, yes Aditi, certain matters means these 6 matters only, जो कि section 143 subsection 1 में लिखे गए हैं, ठीक है. Now we are talking about what? Duty to report, ठीक है. तो section 143 subsection 2 में हमने जब पढ़ा था what is that the auditor has a right to report, तो क्या पढ़ा था? Report to the members,
on the accounts examined or what financial statements, and such report shall take into account the various provisions of Companies Act, accounting standards, auditing standards, and the various matters that are referred to in provisions, rules, and order. Remember, and the language that will be used is to the best of the information and explanation the financial statement reflected true and fairly. Remember all that thing. Let me just show it to you again. So this was the point. Report, right to report, है ना, यही था ना कि रिपोर्ट करना है मेंबर्स को, है ना, and it shall take into account provisions to the best, and this is the language that will be used, है ना. तो पहले तो ड्यूटी में ये सेम आएगा, ठीक है, ठीक है. So same is mentioned here, ठीक है. Now as per section 143 subsection 3, the auditor's report shall also state these points. ठीक है, as per section 143 subsection 3, the auditor's report shall also state 10 points. ठीक है, don't get confused between section 143 subsection 1 certain matters to inquire. Those 6 matters the auditor needs to inquire, and in case of any special comment, then only mention in the audit report is required. ठीक है, but here with respect to these 10 points given in section 143 subsection 3, what is mentioned here? The auditor's report shall also state. So the term used is what? Shall. ठीक है, shall also state. तो ये तो रिपोर्टिंग करना ही करना है, whether auditor is satisfied or he has to give a adverse comment. ठीक है, कोई भी स्पेशल कमेंट देना है या वो satisfied है इससे, फिर भी auditor will have to state with respect to these points. Clear? ठीक है. So there are 10 points I told you. बहुत लॉजिकल है. देखो, सबसे पहले ऑडिटर क्या बोलेगा? That listen, किसको बता रहा है? टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज द ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस टू whom? द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, he will say that he has sought and obtained all information and explanation which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of his audit, and if not, अगर नहीं मिला है तो what is the detail and what is the effect of such information on financial statements. देखो यहाँ पर ही with respect to this A clause only you will be able to understand कि मिला है तो भी बताना है, नहीं मिला तो भी बताना है. Shall state, है ना. यहाँ पर 143 subsection 1 वाला नहीं है कॉन्सेप्ट. यहाँ पर क्या है? The auditor shall state. देखो क्या लिखा है? That whether he has sought and obtained all the information and explanation. देखो जो right की बात कर रहे थे ना, to obtain information explanation from the officer, अब यहाँ पर ड्यूटी क्या है कि हम बता रहे हैं कि देखो जो हमारा राइट था ना, हमने एक्सरसाइज कर लिया, हमारी वो ड्यूटी भी है, तो वी हैव डन दैट. ठीक है, एंड इफ नॉट, और अगर नहीं हुआ है, देन व्हाट आर द डिटेल्स, कौन सा इंफॉर्मेशन यू हैव नॉट रिसीव्ड एंड द इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मिला है तो भी बताना है दैट यस वी हैव सॉट ऑल द इंफॉर्मेशन. यही लैंग्वेज रहेगा. यू विल सी इन द एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट, प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट, द सेम लैंग्वेज विल बी यूज्ड. And that if not, then the details thereof and the effect of such information on the financial statement. Clear? बहुत लॉजिकल है, पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मॉड्यूल को रीड करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद when you will sit to start learning or start preparing for your exams ना, तो आपको if you have listened to the sessions with concentration, if you have gone through the module twice, है ना, at least twice, and you have made summaries, if you have a practice of making summary, है ना, तो जब आप प्रिपेयर करने के लिए बैठोगे ना, द लर्निंग पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी इजी बिकॉज कंसेप्ट इज क्लियर. और क्योंकि अब आपने इतना सारा पढ़ लिया है, लैंग्वेज विल ऑटोमेटिकली कम, है ना. एंड इसमें क्या है? लॉजिकल है. कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द वे जाके, ठीक है, लॉ बेस्ड है बट वेरी लॉजिकल, कि हम क्या बता रहे हैं मेंबर्स को कि देखो हमने सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, हमने ले ली थी. रिमेंबर, जहां ऑफिसर एंड वेयर वी हैव done that point to obtain information explanation from the officers,
और वहां पर क्या था, द ओनली रेमेडी अवेलेबल इज टू इन्फॉर्म द मेंबर्स। तो देखो यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहे हैं ना, एंड इफ नॉट द डिटेल्स देयर ऑफ एंड द फैक्ट। रिमेंबर, देखो रिलेट कर पा रहे हो ना, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, वेदर इन हिज ओपिनियन, तो ये दोनों किससे रिलेटेड है? ये वाला तो है सेक्शन 128 की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सेक्शन 128 क्या बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, और ब्रांच से भी जो है, इफ द ब्रांच बुक्स आर मेंटेन्ड एट दैट ऑफिस बट प्रॉपर एडिक्वेट समराइज्ड रिटर्न्स आर sent to the registered office. So now auditor is saying that whether in his opinion proper books of accounts as required by law में कहाँ लिखा है? section 128 में, have been kept by the company so far as appears from his examination of those books and proper returns adequate for the purposes of his audit have been received from branches not visited by him. देखो, I told you in the last session that the two regulators with respect to company is what? Basically, what I mean to say that two bodies with respect to a company are what? Directors and shareholders. अब directors कुछ काम कर रहे हैं, shareholders ने अपने फंड दिए हुए हैं, so there is a responsibility on the director to tell the shareholders कि कौन सा फंड कहाँ लगा हुआ है, कैसे वर्किंग हो रही है, what are the profits, है ना? But there is a need of what? Independent examination of such financial statement. तो अब when the auditor has audited the financial statement, अब auditor is telling the members, shareholders को कि देखो, in our opinion, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी कंपनी है ना, उन्होंने ठीक से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है, बिकॉज शेयर होल्डर्स थोड़ी ना चेक कर सकते हैं, है ना? बट शेयर होल्डर्स किसके ऊपर बिलीव करते हैं? दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, दी ऑडिटर्स रिपोर्ट पे. सो द ऑडिटर इज टेलिंग द शेयर होल्डर्स, है ना? एक बार अंडरस्टैंड करो ना कि व्हाई दिस ड्यूटी हैज बीन कास्टेड ऑन द ऑडिटर बाय सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, है ना? तो हम मेंबर्स को क्या बता रहे हैं कि मेंबर्स सुनो, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ना हमें मिल गई है, और जो नहीं मिली है वो ये है, उसका इफेक्ट ये है, ठीक है. सेकंड में हम क्या बता रहे हैं, देखो जो लॉ में सेक्शन 128 कहता था ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, शेयर होल्डर्स थोड़ा मेंटेन करेंगे, कंपनी कर रही है ना, बट शेयर होल्डर्स को पता तो होना चाहिए ना कि कंपनी ठीक से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है नहीं एज पर लॉ. तो अब हम बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है. सो वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर proper books of accounts as required by the law has been kept by the company so far as it appears from the examination of those books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received from the branches not visited. सिंपल है ना? जो हमने अभी तक पढ़ा, अब अपने पास थोड़ी ना रख लेंगे उस इंफॉर्मेशन को, शेयर होल्डर्स को बताएंगे ना. शेयर होल्डर्स को सबको जाके थोड़ा बताएंगे, अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेंगे ना. कहाँ मेंशन करेंगे? सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में. समझ आता है, लॉजिक समझ आता है, फिर देखना पॉइंट्स भी बहुत इजीली लर्न हो जाए, ठीक है. थर्ड पॉइंट, दिस इज रिलेटिंग टू व्हाट? ब्रांच, ऑडिट ऑफ ब्रांच, जो कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 में है. Whether the report on accounts of any branch office of the company audited under section 143 subsection 8 by a person other than company's auditor. See, it might be possible ना कि अगर कंपनी क्लाइंट का कोई ब्रांच है तो उसका ऑडिट the principal auditor is doing. On the other hand, it might be possible that company auditor is not conducting the audit of the branches. उसके लिए separate auditors हैं, है ना? So whether these has been sent to him under the provision of this subsection and the manner in which the same has been dealt with in while preparing his report. तो अभी के लिए I think कि आपको समझ आ गया कि क्या auditor needs to understand. But जब हम exercise 600 करेंगे ना, then we will be taking up this point again. तो अभी क्या है कि the accounts of the branches which have been audited by some other auditor, not the company auditor. तो उन branches की रिपोर्ट जो है ऑडिटर की, वो भी तो ऑडिटर देखेगा ना, कंपनी ऑडिटर. So whether these have been received and how he has dealt with those report in his report of the company. ठीक है, सिंपल है. पहले में क्या बोला? देखो शेयर होल्डर सारी इंफॉर्मेशन मिल गई या ये नहीं मिली, इसका ये फैक्ट है. दूसरे में क्या बोला? जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना, उस हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और प्रॉपर समराइज रिटर्न ब्रांचेस से आ रही है. थर्ड में क्या बोला? जो ब्रांचेस की ऑडिट रिपोर्ट है ना, वो हमने देख लिया एंड ऐसे ऐसे हमने डील किया उससे. सिंपल है, ठीक है. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स बहुत सिंपल है. हम शेयर होल्डर्स को कह रहे हैं, देखो शेयर होल्डर्स जो कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल है ना, जो रिपोर्ट में हमने रेफर किया है, दीज आर इन अग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स. जो भी रिटर्न्स हैं
रिटर्न्स इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो भी ब्रांचेस से रिटर्न आ रही है या लेट्स से जीएसटी रिटर्न्स है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी लेजर्स हैं, सबसे टैली कर रहा है बैलेंस शीट एंड पीएनएल। शेयर होल्डर्स यही तो जानना चाह रहे हैं ना कि ठीक है या नहीं। तो दिस इज अ लैंग्वेज वेदर द कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेल्ट विद इन द रिपोर्ट। एक रिपोर्ट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है ना, सो जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च लेट्स से 2021 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021, these are in agreement with books of accounts and returns। अब शेयर होल्डर्स थोड़ा ऑडिट कर रहे हैं, हम ऑडिट कर रहे हैं ना, तो हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। Whether in his opinion the financial statement comply with accounting standards। शेयर होल्डर्स को कैसे पता, सबको थोड़ी ना नॉलेज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे कैसे अप्लाई होते हैं, वो थोड़ी ना चेक कर रहे हैं। सो द ऑडिटर इज स्टेटिंग, ही शैल स्टेट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 कि जो कंपनीज हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ आता है, आएगा समझ अगर लॉजिकली लॉजिक समझो, ठीक है। देन F point, the observations, तो start कैसे होता था, the auditor shall state the observations or comments of the auditors on financial transactions or matters which may have an adverse effect on the functioning of the company। तो अब हम शेयर होल्डर्स को क्या बता रहे हैं, देखो सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या आ जाएगा, आपका सेल परचेज है ना, या लेट्स से एनी ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल टर्म्स, ये सब आ जाएगा। एनी ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर और मैटर्स दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। Let's say, let us take an example. If there is a litigation which is going on against the company and there is a material uncertainty with respect to the outcome of that litigation, auditor को क्या लग रहा है कि भाई ये litigation जो है ना, the company may lose this litigation and then there will be what significant outflow and it will have an impact on the functioning of the company. So here in clause F of section 143 subsection 3, the auditor is going to state his observation or comments on such transactions or matters. So I've given you example of matters which have an adverse effect on the functioning of company. ऐसा हो सकता है ना case lose कर दे company, मटीरियल अनसर्टेनिटी है, यू ऑल हैव डन ऐसे 570 भी किया है ना आपने, गोइंग कंसर्न पे मटीरियल अनसर्टेनिटी है ना, सो ऑडिटर विल हैव टू मेंशन इट हियर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में observation or comments of auditor on any of the financial transaction, say if any of the financial transaction is prejudicial to the interest of the company, कोई purchases है बहुत high prices पे किया हुआ है, sales बहुत lower price पे किया हुआ है, why है ना, सो ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स दिस इज टू बी मेंशन इन क्लॉज नंबर F। क्लियर है, ठीक है। Whether any director is disqualified for being appointed as auditor under subsection 2 of section 164, है ना, ये आपने सबने किया होगा in your law। section 164 subsection 2 में a director becomes disqualified, है ना, there are various situations like if a director is declared as undischarged insolvent, है ना, तो he becomes disqualified, है ना, this is one of the example। so whether any director is disqualified, अब कैसे बनाने शेयर होल्डर को, section 143 subsection 3 में रिपोर्ट कर, ठीक है। any qualification, reservation or adverse remark, basically any negative remark relating to maintenance of accounts and other matters connected there to section 128, section 129 क्या कहता है, true and fair है या नहीं, तो any qualification, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, तो शेयर होल्डर्स को कहां बताना है, क्लॉज H में। क्लियर, नाउ क्लॉज I, यू ऑल हैव डन दिस इन चैप्टर नंबर 4 एंड वी हैव डन दिस इन डिटेल। क्या है, whether a company has adequate internal financial control with reference to financial statement in place and also the operating effectiveness of such controls, ठीक है। auditor will have to report to the company, to the shareholders regarding whether the company has adequate internal financial control with reference to the financial statement and the operating effectiveness also, ठीक है। But if you remember, such requirement of reporting is not applicable to a private company. We have done this quite in detail. To a private company, which is one-person company, small company, or company having a turnover of less than 50 crores as per the latest audited financial statement. And see, this is what and यहाँ पर तो और है
कि या तो वो 1% कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, इफ इट इज अ 1% कंपनी देन इट इज नॉट applicable. Small company hai, then also it is not applicable. And company having a turnover of less than 50 crores as per the latest audited financial statement and having aggregate borrowings from bank, financial institution or any body corporate at any point of time in the financial year less than 25 crores. So and अगर इसमें से ये 26 crores हो जाती है then internal financial control पे reporting आएगा. ठीक है. And students are saying ma'am we have covered only till section 148 in law. कुछ नहीं होता. देखो मैंने आपको बता दिया ना कि क्लॉज नंबर जी में क्या लिखा है that any of the director is disqualified as per section 164 subsection 2. I've given an example that if the director has been declared as undischarged insolvent or if let's say the director has been convicted of a court for an offense है ना, which is including any imprisonment for a certain time. So there are certain disqualifications for an auditor that if this happens, he is disqualified to be appointed as a director, not auditor. ठीक है? So these are the points. तो इतना understanding is enough for this chapter. ठीक है? Internal financial control पे report करना है उसके operating effectiveness में, but with respect to private company which is 1% company or a small company or company जिसका turnover is less than 50 crores और जिसका जिसका borrowings and from banks and financial institution या any other body corporate at any point of time during financial year is what less than 25 crores. दोनों condition satisfied है then IFC पे reporting नहीं चाहिए. Clear है till clause I? बताओ. Quickly sending your replies. Clause I तक clear है? लॉजिकली समझोगे ना स्टूडेंट्स, लर्निंग भी हो जाएगी. Quickly send in your replies. Then I'll start with clause G. इंटरेस्टिंग है, सब कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें ना. देखने में लगता है कि कंपनी लॉ है, बोरिंग होगा, बट नहीं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. चलो तो सिद्धार्थ, Ben Reddy, Hitesh, Bindu, Menon, Rahul, all are saying ma'am all concepts are clear madam. ठीक है. चलो clause D. So this is the miscellaneous clause which says such other matters as may be prescribed. But rule 11 में ना बहुत important matters prescribed हुआ. So very important clause. ठीक है. So एक बारी क्विकली देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे. ड्यूटी टू रिपोर्ट. तो पहले तो हमने क्या बोला 143 सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ऑडिटर को रिपोर्ट करना है मेंबर्स को ऑन दी अकाउंट एग्जामिन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड matters containing in provision, rules and order. And what language? That to the best of the information and knowledge the said accounts contain give a true and fair view of the company's state of affair as on this date and all that thing. ठीक है. 143 subsection 3 क्या कहता है? ऑडिटर रिपोर्ट शैल ऑल्सो स्टेट. क्या क्या बताएंगे शेयर होल्डर? सुनो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना हम जिसके लिए हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, एक्सप्लेनेशन मिल गई है एंड जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है उसके डिटेल्स ये हैं, उसका इफेक्ट ये. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, as per law whatever books of accounts are to be maintained that has been maintained है ना, and the returns that are required to be sent to the head office have been received with respect to the branches for which we have not audited, we have not visited. Third, it says that 143 subsection 8 में जो branches की report है ना, branch report, we have received it and this is the way, this is the manner we have dealt with such report in our report. That the company's balance sheet and P&L, they are in agreement with books of accounts and returns, that the financial statement comply with accounting standards. The auditor shall also state what observation comments of the auditors on financial transaction and any matter which have a adverse effect on the functioning of the company. I gave you example of what material uncertainty with respect to outcome of a litigation, which may lead to what a significant outflow. The functioning of the company may get affected. Then whether any director is disqualified for being appointed as director under subsection 2 of section 1.
64. Whether any qualification, reservation, adverse remark relating to maintenance of accounts and other matters connected therewith. देखो, अगर कोई adverse remark है तो auditor will mention what? That there is an adverse remark यहाँ with respect to this. और अगर नहीं है, then also auditor will mention there is no adverse remark. समझ आता है? Auditor has to state, लिखना ही लिखना है, ठीक है? Whether the company has adequate internal financial control with respect to financial statement and the operating effectiveness, लेकिन with respect to these private company, which are maybe 1% company or small company or company having turnover of less than 50 crores as per the latest audited financial statement and having aggregate borrowings from banks or financial institution or any body corporate any point of time during the financial year less than 25 crores. So in that case, IFCP reporting नहीं चाहिए, ठीक है? And last point is what? मैम clause D explain कर दो again. अब कौन सा है सिद्धार्थ? Simple है ना? Whether the company's balance sheet and profit and loss account dealt with in the report. जो हमने balance sheet और profit and loss account जिसका audit किया है और जिसका mention किया है इस report में, are in agreement with the books of accounts and return. Books of accounts में क्या आ गया? आपके ledgers आ गए ना? आपके जितने भी cost records हैं वो आ गए ना, है ना? स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, जो भी मेमोरेंडा बुक्स हैं, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं, तो जो भी इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में इन्वेंट्री आ रही है वो टैली कर रहे हैं नहीं जो आपके बैलेंस शीट और पीएनएल में आ रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर सिद्धार्थ? है ना? तो ये भी तो मेंशन करेंगे ना शेयर होल्डर्स को. इज इट क्लियर सिद्धार्थ? Yes, Aditi, you are absolutely clear. It will be applicable. So Aditi is saying कि मैम यहाँ पर तो if it is not meeting the criteria, यहाँ पर तो कम है, but यहाँ पर meet हो जाता है criteria कि 26 crores है, तो will it be applicable? Yes, because the term, what is mentioned here and, ठीक है? Less than 50 crores होना चाहिए और less than 25 crores होना चाहिए ना, and से connected है ना, तो more than 25 crores हो गया तो condition fulfill नहीं हुई ना, ठीक है? Aditi, is it clear? Now Rule 11 of the Companies Audit and Auditor Rules 2014 prescribe other matters to be included in auditor's report. So देखो यहाँ पर भी क्या लिखा है? The auditor's report shall also include in their views and comments on the following matters. Shall also include, है ना? बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है. आप सोचो आप शेयर होल्डर्स को बता रहे हो कि देखो शेयर होल्डर्स, हमने तुम्हारे लिए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया है. अब सुनो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना बुक के, उसमें whether the company has disclosed the impact if any of pending litigation on its financial position in its financial statement. एंड सुनो शेयर होल्डर्स, कंपनी ने ना अच्छे से डिस्क्लोज कर दिया है इम्पैक्ट ऑफ एनी पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लाइक इफ प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड, प्रोविजन बन गया है. कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह शो करना था नोट्स टू अकाउंट में, वो भी मेंशन किया है ना? तो शेयर होल्डर्स को व्हाट वी आर सेइंग दैट देखो, अब आप बोलोगे कि कौन कौन से मैटर्स पे, ऐसे तो क्या क्या आप डिस्क्लोज करोगे, क्या 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 मैटर्स आप रिपोर्ट करोगे. सो दैट इज व्हाई लॉ इज मेड ना कि इन वाले मैटर्स पे तो रिपोर्ट करना ही करना है. शेयर होल्डर्स मस्ट बी अवेयर बाय अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स. तो इसीलिए रूल 11 में ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 इट इज स्पेसिफिकली मेंशन कि इन मैटर्स पे तो आपको रिपोर्ट करना ही करना है, ठीक है? एंड स्टूडेंट्स यू विल सी इन चैप्टर नंबर 11 कि क्योंकि देयर इज अ सेट फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, इट इंक्रीजेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, है ना? एक सेट फॉर्मेट दिया हुआ है ना, कंपेरेबिलिटी कर सकते हो ना, बिकॉज सारे ऑडिटर्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट ऑफ द कंपनीज दे आर फॉलोइंग दिस फॉर्मेट, ठीक है? सो Section 143, subsection 3, and the rules of, that the company's audit and auditor rule, and more specifically here rule 11, it prescribes that इस matter पे तो auditor को report देना ही देना है. So हम shareholders को क्या बता रहे हैं? Company has disclosed the impact, if any, of pending litigation on the financial position in its financial statement.
Second, whether the company has made provision as required under any law or accounting standards for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts, including derivative contracts. You all must have done in your FM with respect to derivative contracts. So if any provision is to be made with respect to foreseeable, जो future में हो सकता है, जो अभी दिख रहा है, material foreseeable losses on long-term contracts with respect to what derivative contracts, including derivative contracts, so the provision has been made or not. Whether there is delay in transferring amounts required to be transferred to investor education protection fund by the company. Section 125 of the Companies Act, it requires the company to transfer the amount to investor education and protection fund within stipulated time period. So if there is a delay, the auditor will have to mention that. Hiral, you are right. Okay. So this, is it clear? 3 points. So basically rule 11, pehle na, only these 3 points used to be there. Now the further points that we'll be doing, there is an addition. If you remember, when I started with duty topic, I told you that these duty are the scope of the duty of the auditor is expanding over years. So these are the addition, the clauses that we'll be covering just now from 4th clause onwards. ठीक है? So rule 11 ने 3 clauses क्या क्या बोले कि अगर कोई pending litigation है, उसका impact financial position पे, whether that has been disclosed, whether if any provision was required with respect to what, any material foreseeable losses on account of long-term contracts, including derivative contracts, whether that has been done. ठीक है? And with respect to if there is a delay in transferring amounts required to be transferred with respect to what unpaid dividend to the investor education protection fund in terms of section 125, whether that has been done or not. Clear? Kuch doubt hai, batao. Then I'll proceed with point number 4. And go. Please help Priya Ranjan. What is the situation? Send in your query. Okay. So with respect to derivative contracts, you will be getting the knowledge about derivative contracts in your FM. Okay, as in when you will be doing it. Okay. Now do one thing. Go through clause number 4. Clause number 4. Point number 1 and 2, and tell me, have you done this earlier and in which chapter? I'm just reopening my PDF. It is not working. Wait. So tell me, clause number 4, have you read it somewhere earlier? So Hiral, I didn't get your query, but see, all these matters, 10 points the auditor needs to state in the audit report. Okay? All are independent of each other. ऐसा नहीं है कि F करना है या G नहीं करना या A to I करना है, J नहीं करना. तो सभी clauses पे wherever they are applicable, like applicability से I mean अगर IFC यहाँ fall ही नहीं करता इस कंपनी में तो यहाँ पे नहीं चाहिएगा. But with respect to all the points, the reporting will be required. So Nilabjo has only answered with respect to 4th clause. I need answers from others also. कहाँ पर पढ़ा है? See, students, I'm asking about this point. Specifically this 4th clause. Only one right answer from Nilabjo. Chapter number 9 किया है ना? हाँ, Pooja has answered it correctly. Hiral ने भी बोला है. So chapter number 9 किया है. वहां पर borrowings का टॉपिक किया है.
उसके नोट्स पढ़े हैं? बताओ, अब तो सब बता दिया. Send in your replies. So Meghna, Hitesh and Prabhas, they are saying ma'am chapter number 9. और representation word आ रहा है, तो that is why many of you are writing written representation. So students, I told you that in the amended schedule 3 that you all have done in chapter number 9, there are reporting requirements on the management कि ये सब disclosures देने हैं. As per schedule 3, these are the disclosures that is required. And I told you that in chapter number 10, you will see that wherever such disclosures requirement have been implemented on the management. Now here in chapter number 10, you will see, and more specifically here, and when we will be doing CARO in this chapter, you will see that whatever disclosure requirements are there in chapter number 9 and the responsibilities on the management to disclose all those points, here there will be the duty of the auditor to tell the shareholders that whether such disclosures which are required by amended schedule 3, whether such disclosures have been made by the management. है ना? तो अगर आपकी चैप्टर 9 की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, that you have understood all the notes relating to borrowings, relating to share capital, relating to each and everything, then you will be able to understand in this clause in a better way. And more specifically, next session में we will be doing CARO now. So I want all of you to read the notes of chapter number 9 before coming for the next session. Why? Because you will see that जहां पर चैप्टर नंबर 9 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है फॉर द मैनेजमेंट, कैरो 2020 मैक्सिमम पॉइंट्स इट सेज दैट ऑडिटर को वो ही सब बताने हैं शेयर होल्डर को कि मैनेजमेंट ने वो ठीक से किया है या नहीं. तो अगर आपको वहां डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पता होगा ना, तो यहाँ पर ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी पता होगा कैरो 2020 में. एंड दिस क्लॉज नंबर 4 ऑल्सो इट इज द सेम. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूली एडेड नोट्स. हीरल, यू आर करेक्ट. ठीक है. सो पॉइंट नंबर 4, इट हैज 3 सब पॉइंट्स 1, 2 and 3. एंड इन द थर्ड पॉइंट ना, जस्ट इसको ना काट, जस्ट राइट इट एज दिस 1 and 2. ठीक है. पेज नंबर 10.37 पे ना इसको write it as 1 and 2 because this third point is talking about these 2 points. एक इसकी बात हो रही है and एक इसकी बात हो रही है. ठीक है. So rule 11 of the company's audit and auditor rules 2014, the fourth clause says that the auditor has to mention that the disclosure requirements whereby the management has to disclose in the notes to accounts that if any funds have been advanced loans or invested out of borrowed funds or share premium by the company. कंपनी कौन? जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं. किसको दिया है कंपनी ने? सी आउट ऑफ द बोरोड फंड्स या आउट ऑफ द शेयर प्रीमियम. अगर कंपनी ने, जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, इसने कुछ एडवांस दिया है, कुछ लोन दिया है या कुछ इन्वेस्ट किया है, कहां पर? इन एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज, एंड हियर इट इज नोन एज व्हाट? इंटरमीडियरी. तो अभी हम ए लिमिटेड हमारा क्लाइंट है, इसकी बात करते हैं. इसने क्या किया? आउट ऑफ द बोरोड फंड्स और शेयर प्रीमियम इट हैज गिवन सर्टेन फंड्स टू एन एंटिटी जिसको इंटरमीडियरी बोला गया है. और इंटरमीडियरी को क्या बोलता है? ईदर इन राइटिंग और ओरल और अदरवाइज. मतलब ओरल अंडरस्टैंडिंग है. क्या अंडरस्टैंडिंग है? कि सपोज दिस इज एक्स, दैट एक्स लिमिटेड you invest these funds in another entity on our behalf, on A limited behalf. So A limited is not directly investing or A limited is not giving the loan directly, but एक intermediary को set करके इसके through transaction किया. So what does this clause say? ये कहता है कि जो मैनेजमेंट के ऊपर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है नोट्स टू अकाउंट्स में, अब हम शेयर होल्डर को क्या बता रहे हैं कि शेयर होल्डर्स लिसन, whatever management has disclosed in notes to account with respect to these transaction, इसके अलावा there is no other transaction. इसके अलावा there is no other transaction.
So we are telling the shareholders that ये कॉन्सेप्ट समझ आया क्या था, है ना? तो अब इससे रिलेटेड हमें क्या रिपोर्ट करना है, मैनेजमेंट को तो ये डिस्क्लोज करना था नोट्स टू अकाउंट्स में. नाउ वी आर टेलिंग द शेयर होल्डर्स दैट लिसन शेयर होल्डर्स, जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया ना, उसके अलावा देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन ऑफ सच काइंड. ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज. अब रीड दिस पैराग्राफ slowly with me. Whether management has represented that to the best of management's knowledge and belief other than as disclosed in the notes to accounts, कि जो notes to accounts में आ गया वो तो है, but उसके अलावा और कुछ नहीं है. No funds have been advanced, loans invested, कहाँ से, out of borrowed funds or share premium or any other sources by the company, मतलब जो हमारा client है A Limited, to or in any other person entity including foreign entity, मतलब इस केस में कौन, X Limited, with understanding whether recorded in writing or otherwise that the intermediary X shall whether directly or indirectly lend or invest in other persons, मतलब यहाँ पर let's say Y, or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the ultimate beneficiary कौन, A Limited, और प्रोवाइड एनी गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी. ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई इंटरमीडियरी बनाई है और फिर उसको जो इन्वेस्ट उसने आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट किया है, तो जो मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करना था उसके अलावा भी कुछ है. क्लियर? सो ऑडिटर विल से वेदर मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड, मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट कर दिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दी ना कि इसके अलावा और कुछ नहीं है. ठीक है, सेम वे दिस इज द अदर क्लॉज, है ना? व्हाट इज इट सेइंग कि अब यहां पर ए लिमिटेड क्या है, इंटरमीडियरी बन गया है. तो ऐसा तो नहीं है ए लिमिटेड को कोई पैसा मिला है कि ए लिमिटेड को वो कहीं पे इन्वेस्ट करना है, एंड जो डिस्क्लोज किया उसके अलावा तो कोई नहीं है. ठीक है, सो व्हाट इज मेंशन्ड, वेदर द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड दैट टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ अदर देन एज डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जो डिस्क्लोजर चैप्टर 9 में पढ़ा और हमने कर दिया कंपनी ने, नो फंड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी. अब ए लिमिटेड हमारा क्लाइंट कहाँ है, इंटरमीडियरी की पोजीशन पे, और एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी फ्रॉम एनी पर्सन और एंटिटी. अब इसको क्या बोला गया है, फंडिंग. मतलब यहाँ पर अगर वाई लिमिटेड ने हमारे क्लाइंट को कुछ पैसा दिया है तो वाई लिमिटेड इज व्हाट, फंडिंग एंटिटी, और हम कौन है, इंटरमीडियरी. विद एन अंडरस्टैंडिंग वेदर रिकॉर्डेड इन राइटिंग और अदरवाइज दैट द कंपनी, कौन कंपनी, ए लिमिटेड, शैल वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेंड और इन्वेस्ट इन अदर पर्सन्स identified in any manner by or on behalf of funding party, कौन है, Y Limited, और प्रोवाइड गारंटी और द लाइक ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी. अब यहाँ पे अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, वाई लिमिटेड ना, बिकॉज जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में एक्स था ना इंटरमीडियरी, नाउ आर क्लाइंट हैज बिकम दैट इंटरमीडियरी. सो दिस क्लॉज सिंपली सेज कि अगर कोई ऐसा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो कि है शेड्यूल 3 में कि वो प्रॉपरली डिस्क्लोज हुआ है या नहीं, तो मैनेजमेंट से हम बोल देंगे मैनेजमेंट हमें लिख के दो कि इसके अलावा और कुछ नहीं है, जितना आपने डिस्क्लोज किया वही है. सिंपल. Is it clear? And third point is also related to that. What is said that based on such audit procedure that the auditor has considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to their notice that has caused them to believe that representations made under point number 1 and 2 contain any material misstatement. तो यहाँ पर पहले हम मैनेजमेंट से लिख राइटिंग में ले रहे हैं ना कि मैनेजमेंट बताओ जितना डिस्क्लोजर करना था कर दिया ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना. हम शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि मैनेजमेंट ने बोला उसके अलावा कुछ नहीं है. ऐसे सेकंड पॉइंट में. थर्ड पॉइंट में व्हाट वी आर सेइंग कि सी बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर जो हमें कंसीडर प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग रीजनेबल एंड एप्रोप्रिएट किया, इट नथिंग हैज कम टू आवर नोटिस जिससे कि हमें लगे द रिप्रेजेंटेशंस दैट मैनेजमेंट हैज मेड इन 1 and 2 दे हैव एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट. क्लियर? बताओ. Or this topic is going to be clear to the students who have a good understanding of chapter number 9. वैसे तो I have tried कि आपको quickly जितना टाइम देना चाहिए था I have explained it, but still, and I'm telling you again, CARO 2020 understand करने के लिए chapter 9 की understanding is very very important. Yes, Hiral. All chapters are consolidated, interdependent, and interrelated. So Hiral has mentioned this.
एंड सिद्धार्थ एंड राहुल आर सेइंग मैम इट इज क्लियर. ठीक है, अभी मैंडेटरीली ऑडिटर को रिपोर्ट करना है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल. वेदर, तो ऑडिटर shall also state whether the dividend declared or paid during the year is in compliance with section 123. So it is why पूजा, उन्हीं का पैसा लगा है ना, तो अल्टीमेटली उन्हीं को बेनिफिट होगा ना अगर कुछ भी इंटरेस्ट मिलता है या कुछ भी है. So whether the dividend declared or paid during the year by the company is in compliance with section 123 of the Companies Act. Section 123 किससे डील करता है? Students quickly send in your replies. बताओ. So it is with respect to declaration and payment of dividend, है ना? So whether all the provisions of section 123, if the dividend has been declared and paid during the year, whether it is in compliance with section 123 of the Companies Act. ठीक है, सो एक बारी क्विकली देखते हैं हमने क्या पढ़ा. पॉइंट नंबर 1 भी देख लो. यहाँ पर हमने क्या पढ़ा ड्यूटीज में. वी हैव स्टडीड 143 सबसेक्शन 1 में सर्टेन मैटर्स. कितने मैटर्स है? 6 मैटर्स है. इंक्वायर करना है, कुछ भी स्पेशल कमेंट्स है तो ही रिपोर्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना. क्लियर है? कौन कौन से मैटर्स है कि लोन एंड एडवांस है, सिक्योर्ड है नहीं प्रॉपरली, टर्म्स प्रिजुडिशियल तो नहीं है, ट्रांजैक्शंस हैं रिप्रेजेंटेड मेनली बाय बुक एंट्रीज, प्रिजुडिशियल तो नहीं है. कंपनी अगर अदर देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज है तो ऐसा तो नहीं है दैट एनी ऑफ द एसेट्स व्हिच आर शोन बाय वे ऑफ व्हाट शेयर्स डिबेंचर्स दिस हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन परचेज प्राइस. ऐसा तो नहीं है. लोन्स एंड एडवांसेस हैज बीन शोन एज डिपॉजिट्स. पर्सनल एक्सपेंसेस शुड नॉट बी चार्ज टू रेवेन्यू एंड इफ एनी ऑफ द शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश. चैप्टर नंबर 9 में आपने देखा होगा दैट शेयर्स अलॉटेड फॉर कैश सेपरेटली डिस्क्लोजर चाहिए, है ना? And if no cash has been received, then whether the position which is shown in the books of accounts and balance sheet is what correct, regular and not misleading. ठीक है? And the opinion of research committee of ICI says that इसको कब आपको रिपोर्ट करना है? If special comments है, otherwise need not mention, but ड्यूटी तो रहेगी. ठीक है, ड्यूटी टू रिपोर्ट 143 सबसेक्शन 2 तो क्लियर है जो हमने राइट में पढ़ा. ठीक है, एंड दीज आर स्टूडेंट्स द सेम पॉइंट्स जो रूल 11 में आ रहे हैं ना. सो ये सेम पॉइंट्स हैं वो. ठीक है, सो 143 सबसेक्शन 3 में 10 पॉइंट्स आए. ठीक है, सो पहला क्या है कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गया है विच आर रिक्वायर्ड to the best of his knowledge and belief, and अगर नहीं मिला है what are the details and what are the effects. सेकंड में हम क्या बोलते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर लॉ मेंटेन्ड है और जो रिटर्न्स आने चाहिए थे फ्रॉम द ब्रांचेस दीज आर रिसीव्ड with respect to branches not visited by the auditor. Him मतलब auditor. थर्ड में हम क्या बता रहे हैं कि ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट आ गई है and this is the way we have dealt with it in our audit report. फोर्थ में हम क्या बता रहे हैं that the balance sheet and P&L are in agreement with books of accounts. मतलब जिस बेसिस पे आपका बैलेंस शीट एंड P&L आता है वो सब मैच कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न से. एंड ई पॉइंट में वी आर सेइंग दैट कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. देन वी आर सेइंग दैट if we that these are our observations or comments with respect to the financial transactions or matter which have an adverse effect on the functioning of company. Then whether any director is disqualified to be appointed as director in terms of section 164 subsection 2. Then any qualification, reservation, adverse remark relating to maintenance of accounts and other matters. Then clause I is not applicable to certain companies, but agar wo criteria meet nahi hota, it is applicable. So auditor will have to say whether adequate internal financial control with reference to financial statement is in place and operating effectiveness hai ya nahi. And clause J, which says as such other matters as may prescribed, very important rule 11 है. फर्स्ट पॉइंट कहता है कोई इम्पैक्ट तो नहीं है पेंडिंग लिटिगेशन का फाइनेंशियल पोजीशन पे. सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर कोई फोर्सिएबल मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेज है ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव तो अगर प्रोविजन बनाना था बन गया है या नहीं. एंड थर्ड पॉइंट कहता है दैट is there any delay in transferring amounts of unpaid dividend with respect to the investor education and protection fund in terms of section 125 of the Companies Act. ठीक है. फोर्थ क्या कहता है कि अगर मैनेजमेंट को कुछ डिस्क्लोज करना था विद रिस्पेक्ट टू दीज द ट्रांजैक्शन, है ना, ये दोनों टाइप की ट्रांजैक्शन. सो वेदर मैनेजमेंट हैज गिवन अ रिप्रेजेंटेशन कि इसके अलावा तो नहीं है ना कोई विच हैज बीन डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और थर्ड पॉइंट इसका क्या कहता है दैट ऑडिटर को ऐसा नहीं लगा कि रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट ने दी है दैट इट हैज एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट.
ठीक है. Fifth clause says that dividend declared or paid during the year by the company is in compliance with section 123, and that's it. This was with respect to what? Section 1. This is with respect to what? Duty to report, and more specifically with respect to section 143 subsection 3. बताओ clear है ना? Let us just quickly look at this next point. Duty to sign the audit report, and this is contained where in section 145. बहुत simple है. देखो ये क्या कहता है कि it is the duty of the auditor that auditor shall sign the auditor's report to certify to sign or certify the auditor's report, and it is also duty to sign or certify other document of the company as required in section 141 subsection 2. अब quickly बताओ section 141 subsection 2 क्या बोलता था? I'll tell you. Section 141 subsection 2 बोलता था अगर कोई firm है including LLP, then the auditor of the company may only chartered accountant partner is authorized to act and sign on behalf of the firm. Simple है ना? तो I told you कि unsigned audit report थोड़ा ना दोगे, sign करोगे, और कहाँ पे लिखा है? Section 145 में लिखा है. कौन साइन करेगा? सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 में लिखा. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट इट सेज दैट एनी ऑफ द क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मैटर्स व्हिच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी मेंशन्ड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, इट शैल बी रेड आउट बिफोर द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. स्टूडेंट्स, ये कौन सा क्लॉज है? जो 143 सबसेक्शन 3 किया उसका क्लॉज एफ जो है वो ही तो है, ये वाला, दिस वन. So it is mentioned specifically here कि अगर ऐसा कोई adverse effect है, देखो everything will be mentioned in the report, but this observation or comment is so significant. Why? Because this is going to have an adverse effect on the functioning of the company. So this shall be read before the company in the general meeting. फिर तो उसको read out करना ही पड़ेगा in the general meeting. Clear है? ठीक है. तो अभी a number of points are left. अभी I'll not start any new topic, पर देखो, listen to just next 5 minutes and that's it. देखो, now if you remember what all we have done, section 145 अभी किया ना, ऑडिटर्स टू साइन ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिसमें हमने 141 सबसेक्शन 2 भी देखा, और हमने क्या देखा? जो क्लॉज एफ था दैट विल बी रेड आउट इन द मीटिंग. आई हैव टोल्ड यू द लॉजिक. व्हाई? बिकॉज ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट रिपोर्ट में तो मेंशन कर ही रहे हैं, बट शेयर होल्डर्स को पढ़ के भी सुनाना है कि देखो ये वाली बात है. इट मे हैव एन नेगेटिव इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. ठीक है. एंड वी हैव डन व्हाट? ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग, जहां पर हमने पढ़ा क्या कि राइट भी होता है, ड्यूटी भी होता है. ठीक है. So next session में 10-15 minutes में starting में we will finish section 142 and 143 and then we will do CARO. ठीक है. ठीक है. But before ending the session for today, I just want to revise as to what we have done today and 5 minutes revision. And students, these revisions ना, these are very helpful. आपका कोई डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है, और एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है समराइज्ड वे में कि इस सेक्शन में क्या कंटेंट है. ठीक है. सो बी विद मी. कोई डाउट है तो प्लीज सेंड इन योर डाउट, है ना. तो एक काम करते हैं, हम राइट्स एंड ड्यूटी से ही स्टार्ट करते हैं, जस्ट द नेक्स्ट 5 मिनट्स. तो पावर्स, राइट्स ऑफ ऑडिटर क्या कहते हैं? सो हियर वी आर कवरिंग सेक्शन 143. सेक्शन 145 भी आता है आगे, और 146 भी आता है. तो राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स दैट एट ऑल टाइम्स टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स वेदर kept at registered office any other place. And what else was mentioned? Let me just take you. And information ले सकते हैं from officer, explanation and information, and not only limited to records maintained in head office but branches का branch record पे भी है. ठीक है. Right to obtain information and explanation from officers, such information as is necessary. नहीं होगा तो auditor will not be able to obtain various information, and if the information is not provided, देखो only remedy report to member. Now you can connect 143 subsection 3 में हम members को बताते हैं. Receive and attend notices, entitled to attend any general meeting, to receive all the notices and other communication which members are entitled to receive.
to be heard at any general meeting in any part of the business that concerns the auditor, them as an auditor, and this is the right as well as duty. To report में हमने देखा right to report to the members on accounts examined and financial statement, and the report shall take into account provisions of act, accounting standard, essays and matters contained in provision, rules and order. And what is the knowledge? The language. This is the language. ठीक है. राइट टू लियन में क्या है? लियन होता क्या है? इट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो कि क्या बोलता है? इफ एनी पर्सन हैविंग लॉफुल पोजेशन ऑफ समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी वेयर ही हैज वर्क मे रिटेन द प्रॉपर्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फीस ऑन अकाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द प्रॉपर्टी. सो ऑडिटर पे क्या बोलते हैं कि अगर लियन ऑन किस पे होगा? बुक्स एंड अकाउंट्स. कोई क्लाइंट की चेयर उठा के थोड़ी ना चले जाओगे, बुक्स एंड अकाउंट्स पे. ठीक है. पोजेशन on by the client for non-payment of fees for work done on books and accounts. ठीक है. And in Institute of Chartered Accountant in England and Wales का भी सेम व्यू है. SC 230 एंड SQC 1 कहता है कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ऑडिटर की प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लियन तो आता ही नहीं है ना. हाँ, ऑडिटर में एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन मेक अवेलेबल सच एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो उसको ठीक लगता है. एट हिज कोई कंपल्शन नहीं है, एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन. ठीक है. देन वी डिड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर. ड्यूटीज में हमने क्या किया? ड्यूटी फर्स्ट इज टू इंक्वायर. तो आई हैव टोल्ड यू दैट रिसर्च कमेटी का ओपिनियन है ऑफ ICI कि इन मैटर्स पे इंक्वायर करो. कुछ स्पेशल कमेंट है तो मेंशन करो, अदरवाइज मत मेंशन करो. सो व्हाट आर दीज? देयर आर 6 पॉइंट्स कि कोई लोन है एंड एडवांसेस तो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, कोई टर्म्स प्रेजुडिशियल तो नहीं है, ट्रांजैक्शंस जो है रिप्रेजेंटेड मेनली बाय बुक एंट्रीज प्रेजुडिशियल तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग कंपनी पे थर्ड क्लॉज अप्लाई नहीं होता. तो अदर कंपनीज है और उसके एसेट्स में कोई शेयर्स डिबेंचर्स आ रहे हैं तो अगर उसको लेस देन परचेज प्राइस पे तो नहीं बेचा है. लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी, डिपॉजिट्स तो नहीं दिखाए हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस को चार्ज टू रेवेन्यू तो नहीं किया है. एंड इफ एनी ऑफ द शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, वेदर कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड, एंड इफ नॉट वो पोजीशन करेक्ट शो किया है या नहीं. 143 सबसेक्शन 2 ड्यूटी रिपोर्ट कैसे रिपोर्ट करना है वो सेम है राइट की तरह. एंड 143 सबसेक्शन 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार्स लगाने हैं लगा दो. ठीक है. तो विद रिस्पेक्ट टू एनी दैट ऑल इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हुआ है. थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू ब्रांच. फोर्थ इज रिलेटेड टू कि बैलेंस शीट और P&L अग्रीमेंट इन बुक्स एंड रिटर्न है नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई किए हैं नहीं, कोई एडवर्स रिमार्क तो नहीं है. और देखो इस पॉइंट को रेड आउट करेंगे मीटिंग में. ये हमने कहाँ पढ़ा? 145 में, है ना, जहां था ऑडिटर टू साइन, बिकॉज दिस इज हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग. तो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए ना, पता चले गोइंग कंसर्न ही नहीं मीट हो रहा है ना. तो दिस विल बी रेड आउट. ठीक है. देन disqualification of any director in terms of section 164 subsection 2, any adverse effect on accounts and other matters, IFC पे करना है if applicable, and such other matters as may be prescribed rule 11. ठीक है. Then we saw with respect to duty to sign, तो 145 में contained है. 141 subsection 2 में बताता है हमें कि कौन कर सकता है साइन. CA, a partner who is authorized to act and sign, and that point needs to be read out in the meeting. Okay. Then with respect to sealing or number of audits, 143 subsection 141 subsection 3 clause G simple है. आपने क्या पढ़ा उसमें कि a person who is in employment, full-time employment somewhere else, या जो already more than 20 companies में hold कर रहा है appointment as an auditor, he is disqualified, he is not eligible. 20 companies में कौन include नहीं होगा, that we have done. पर partner देखना है, and one individual एज एन इंडिविजुअल कितना होल्ड कर सकता है? मैक्सिमम 20. ऐसा नहीं 2 फॉर्म्स में पार्टनर है तो 40 हो जाएगा. रिकॉर्ड मेंटेन करना है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस पे देखना है, नंबर ऑफ ऑडिटर्स कितने हैं. सिंपल है. टैक्स ऑडिट के लिए 60 है ये लिमिट. सेक्शन 177 क्या कहता है? ऑडिट कमेटी का. हमने इसका रेफरेंस सबसे पहले कहाँ देखा था? सेक्शन 139 सबसेक्शन 11 में. सारे लिस्टेड कंपनीज को करना है. एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन इक्वल टू 10 crores or turnover of more than equal to 100 crores, or borrowing public companies having aggregate outstanding borrowings, debentures or deposits of more than 50 crores. ठीक है. और ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूट कौन करता है? कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एंड 3 डायरेक्टर्स तो मिनिमम चाहिए. मेजोरिटी किसका चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का. क्या क्या फंक्शन करता है? रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट
remuneration, terms of appointment, reviewing and monitoring auditors' independence, performance effectiveness of audit process, examination of financial statement, auditors report, and better standard of corporate governance. Okay, so that's it. We have covered section 177, section 141, subsection 3 clause G, and section 145 and 146. ये तो सब डिटेल में किया है. 143 का अभी थोड़ा बहुत is left, which I'll be covering in the next session, and I'm repeating it again, students. Just next 2 minutes, that's it. Next session में chapter 9 का understanding आपको होना चाहिए. And I'll teach you CARO 2020, assuming that chapter 9 is clear. Why? Because जो disclosure requirement chapter 9 में आ रहा है ना, अब CARO 2020 में auditor पे उसके ऊपर reporting requirement है कि ठीक से disclosure किया है नहीं. तो अगर disclosure you have already done in chapter number 9, तो वो understanding should be clear. ठीक है? Apart from that, here your doubts are left. Remind me in the next session. पक्का से I'll take both the doubts. ठीक है. और जिसका भी डाउट था, मैंने एक और स्टूडेंट को बोला था नेक्स्ट सेशन में बोलना. आई थिंक इट वाज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3. आई टेक दैट डाउट अप एंड प्लीज गो थ्रू द मॉड्यूल इन एंटायरिटी. ठीक है. सब कुछ रीड करोगे once or twice, everything is going to be clear. And since now you are in chapter number 10, तो लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली ना खुद से आएगी अगर अंडरस्टैंडिंग होगी सेक्शन की. और कैसे रिवाइज करना होता है, आई टोल्ड यू ना कि कीवर्ड्स को इंग्लिश में बोलो. कनेक्टिंग लैंग्वेज यू मे यूज योर ओन लैंग्वेज, बट कीवर्ड्स को पिक देम एज इट इज. ट्राई टू पिक देम एज इट इज. ठीक है. सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन फॉर टुडे, प्लीज सेंड इन योर रिप्लाई. समझ आया है? कोई डाउट है? The pace, the speed, the way we are discussing things, the way I'm teaching, whether it is good enough or you need something else to be done. Okay? So quickly send in your reply, then we will end the session. चलो ठीक है. So Rahul is saying, ma'am, it is clear. Meghna is saying, ma'am, it is clear. Chalo, theek hai. Thank you and have a good night. Thank you.